Good afternoon, sir. Good afternoon, Dr. Pradeep ji. How are you? Fine. Hello, good afternoon, Pradeep. Good afternoon, Narendra ji. Good afternoon. Good afternoon, Shastri ji. Fine, how are you, Gupta ji? Hello. Yes, good. Nice to see you. Hello. Yes, virtually. Yeah. All of you. Nice to see faces. Yeah, nice to see Yeah, you. good afternoon, sir. Yeah, Good afternoon, sir. Namaskar. Yeah, good afternoon, everyone. Namaskar, Dr. Mahesa. How are you? Yeah, good, sir. Great. Dr. Sridevi, I booked my tickets to Mysore. Thank you, sir. Thank you. Look forward to seeing you. Dr. Ajit also is visiting Jorhat. Namaskar, but tickets are not available for Jorhat. We will kidnap you, don't worry. नहीं आपको नाम ले लीजिए शास्त्री जी का. You come to Northeast and avoid Manipur for the next few days. Okay. Namaskar, Gupta sir. Namaskar, Dr. Ajit. How are you? I'm fine, thank you. You are visiting East. You are not getting ticket. So Dr. Shastri will make the arrangement. I think he is the boss of Jorhat. Yeah, yes. He is the boss. Yeah. Dr. Dolly, can we start? I think most of us have joined. I Dolly think. ji? Yeah, sir. Should we start? Yes. Dr. Abhay has Let us also start. joined. Yeah. Yes. Yeah. Good afternoon, everyone. So today we are having this session on eOffice for all the directors about 15 minutes, and afterwards we are having a session with the nodal officer for a hands-on training. So as everyone knows, we are aware that implementation of eOffice is under process across all the CSIR labs, and instance is very much available with all the users. And I have already shared the status of the login detail with our task force team. I would like JS sir to say a few words about it. Yeah, thank you, Dolly ji. Namaskar, welcome to all of you for on this meeting on eOffice implementation. As we all know that eOffice that we are implementing it across all CSIR laboratories, all the constituent laboratories of the CSIR, and it is good to know that there are many laboratories who have. I was seeing the login count given by Dolly ji. There are many labs who more than 35, more than 1/3 have started using login. That is very good sign. Though overall only 18% of the employees have logged in, but I believe that over a period of a few days, this number will improve not linearly but exponentially. So that is and if you start using eOffice, then we'll forget physical files because eOffice is so convenient.
and it is so the pleasure to use eOffice e-file that it reaches the person, the destination instantaneously, and you can call them that you have sent the file. You do not have to depend on the MTS, anybody to take the physical file and give it to the PS, and PS will give to the officer. So all those things will disappear. So this is really good. I'm really confident all of our employees, all of our laboratories, they will be using this eOffice. This overview session for directors is going to be very helpful, and thereafter we'll have the training sessions of the nodal officers. This training will go on. Just two, three updates I would like to give. This presently only CSIR instance is working. That means you are able to send the file only to CSIR. But within a very short time, say within a couple of days, we'll able to send the e-files to any ministry or any department. And that will be really good. And when that is operational, the Sparrow system, that is the online APR system for the administrative officers, will also start functioning for this, which is already due for this year 2022-23. We are really keen that this should work. I'm really thankful to Dolly ji and her team, and IC coordinator Dr. Rasmi ji and Bimal ji and everybody who have made this possible. So thank you, Dolly ji. Thank you very much. Yeah, thank you, sir. So NIC coordinator Mrs. Rashmi Saxena is with us, and she will give the overview of the eOffice. So, Madam Rashmi Saxena, are you available? So you can share your presentation. One more thing. Just I'm really thankful to Pradeep ji, who has volunteered to be the chairperson of this task force, and really it is a very good task. Thank you so much, Pradeep ji. Thank you, sir. Thank you. Now you got one director of IIP also. I think you will be relieved of that charge. Oh, okay. When? Yeah. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Rashmi madam, are you available? Rashmi madam, you can share your presentation. Yeah, she is joining shortly. She is available. I think speakers connected to his system. Her system is not. उधर से कर लीजिए। Good afternoon, JS sir, and all senior officers of CSIR. Hare Krishna. जैसा कि आपको JS सर ने बताया ये ऑफिस के बारे में, CSIR इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो CSIR wants कि जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, this is the first meeting where the objective is to sensitize them कि eOffice से आपकी expectations क्या होनी चाहिए. Although eOffice जो है वो 2022 से CSIR में चल रहा है. I have been associated with the eOffice implementation in CSIR since beginning,
इनिशियली 1000 लोगों के लिए इसको लिया गया था और CSIR हेडक्वार्टर प्लस कुछ अकाउंट्स लैब के लेके हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करी थी और वो नवंबर 2022 में लाइव हो गया था। उसके रिजल्ट्स देख के व्हेन द प्रेजेंट JS जॉइंड CSIR, उनको लगा कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस भी था और उनको ऐसा लगा कि CSIR में अगर हम इसको और आगे ले जाते हैं, लैब लेवल पे करते हैं तो हमें इसका कंप्लीट बेनिफिट मिलेगा। तो उसी क्यू में CSIR 10,000 लोगों के लिए ही रियली वर्क वेरी हार्ड और डॉली मैडम ने इसको अपनी टीम के संग NIC के संग मिलके इस स्टेज पे लाया है कि आज CSIR में 10,000 रिकॉर्ड्स eOffice में क्रिएटेड है और इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये मैं बताऊंगी आपको हमारी टेक्निकल टीम के संग, जो NIC के हमारी टेक्निकल टीम है। मैं सिर्फ आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशन डाउन द लाइन विद योर ओन ऑफिसर्स क्या होनी चाहिए। ऑपरेशनल पार्ट्स जहां से फाइल क्रिएट होती है वहां से स्टार्ट होता है। यू पीपल आई बिलीव आर गोइंग टू बी द डिसीजन मेकर्स, जो आप फाइल पे डिसीजंस लेंगे, नोटिंग पार्ट एंगे। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगी कि ये ऑफिस का क्या है थ्रू माय प्रेजेंटेशन एंड व्हाट ऑल द कंपोनेंट्स, आप क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो eOffice प्रोवाइड करता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो CSIR ने eOffice के लिए लिया है और अगर आप इसे आगे ले जाते हैं कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन के बाद तो और क्या क्या चीजें इससे ले सकते हैं। तो दैट एक्सपेक्टेशन आई वांट टू सेट राइट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ NIC। यूजर को हम ये चाहते हैं कि उसकी एक्सपेक्टेशन सेट रहे कि जो सॉफ्टवेयर आपने लिया है उससे आपको क्या क्या मिल सकता है, क्योंकि कई जगह हमने ये देखा है कि प्रोडक्ट होने के बाद भी यूजर ये कहता है कि हमें जो है छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाने हैं या हमारा ये काम नहीं हो रहा है, या डाउन द लाइन जो उसकी जो जूनियर्स है वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं तो वो ये कह देते हैं कि साहब इसमें ये फैसिलिटी नहीं है। तो मैं पूरा एक एक्सपेक्टेशन आपका सेट करूंगी अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू कि पूरा प्रोडक्ट आपको क्या दे रहा है, आपने क्या लिया है एंड हाउ यू शुड गो फर्दर अबाउट इट। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू फॉर PPT। मैं पहले PPT के थ्रू दिखाऊंगी, उसके बाद देयर इज अ शॉर्ट फिल्म जो उसका पूरा एक समरी आपके सामने प्रेजेंट करेगा। तो मेरे प्रेजेंटेशन के बाद आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप उस फिल्म को बड़ा केयरफुली देखें। ठीक है, सी eOffice प्रोडक्ट NIC का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने डिजिटाइजेशन में एक क्रांति ला दी है। और क्रांति किस तरीके से, इट इज अ वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट। इनिशियली पहले क्या होता था मैनुअल सिस्टम में कि फाइल क्रिएट हुई या जो इनवर्ड हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, पेपर्स आ रहे हैं, वो एक हमने डायरी करके रख दिया, कुछ खो गए, कुछ नहीं मिले, और आपस में जो रेफरेंसेस हैं हमें अगर देखना है तो वी आर डिपेंडेंट ऑन मैनुअल सिस्टम, ऑन सम ऑफिशियल। हम अगर उसको रख रहे हैं तो हमें वो समय पे मिल नहीं रहा है। उसके अलावा अगर वो मिल भी रहा है तो हम बहुत सी चीजें, इतनी बल्कि फाइल है, हम उसको प्रॉपरली पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर हम उसको एनालाइज करना चाह रहे हैं तो हमें उसमें एक टीम लगानी पड़ रही है। उसके अलावा अगर उस फाइल में से कुछ पेपर्स निकल गए या उसकी प्रॉपर नंबरिंग नहीं हुई तो वो गैप आ गया इंफॉर्मेशन में। अगर कमरे में आग लग गई तो पूरा रिकॉर्ड खत्म हो गया। अगर कोई ऑफिसर गया ट्रांसफर होके अपने संग पूरी फाइल ले गया तो हम उसको ढूंढ रहे हैं, उसकी FIR करा रहे हैं। एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मैनुअल सिस्टम में थी। मैनुअल सिस्टम चल रहा था लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स के संग, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट करता था। तो उसमें ये DOPT DAPRG के पास से डायरेक्शंस आई NIC के पास, जो कि MIT का अटैच्ड ऑफिस है, यू ऑल नो, कि इसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। तो 2005-06 से इस पे काम करना शुरू किया और 2009 में इसका पहला जो है वो आया।
और जो कंपोनेंट्स लिए गए उसमें जो आज भी हैं वो फाइल्स, रिसीट, are you able to hear me all? Yeah, we are able to hear you, but there is some disturbance. I request all the officers to switch off their mic. Akshay Sharma, you are not using. Thank you so much. Yes. So, please continue, so Rasmi ji. The eOffice, why eOffice? Because in any organization, the one thing without which organization cannot run is files, receipt, letters and documents. क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन अगर हमें चाहिए तो हमें फाइल्स चाहिए, रिसीट चाहिए, लेटर चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए. और गवर्नमेंट अगर काम करती है तो ओरल इंस्ट्रक्शंस में कम, राइटिंग में ज्यादा करती है. तो गवर्नमेंट produce and manage volumes of documents which are categorized into files, receipts, letters and documents. And the manual system of file processing has several challenges जो कि मैनुअल प्रोसेसिंग में इनहेरेंट होते हैं, जिसकी वजह से अगर हमें कोई स्कीम्स या गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है या कोई भी हमें काम करना है तो उसमें डिलेज काफी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम स्कीम्स को या अपने ऑब्जेक्टिव्स को टाइमली नहीं पूरा कर पाते हैं. तो चैलेंज मैनुअल सिस्टम के इन चैलेंजेस को देखते हुए कि हम सर्च नहीं कर पा रहे हैं मैनुअल सिस्टम में प्रॉपर्ली, सर्च तो करते हैं लेकिन प्रॉपर नहीं, एंड रिट्रीविंग इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. अगर आप मैनुअल सिस्टम में कोई चीज मांग ले तो राइटिंग में जाएगा, अप्रूवल आएगा, फिर वो फाइल आएगी, बहुत ही टाइम लगता था. फाइल की ट्रैकिंग ही अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता था, और स्टोरेज और उसका प्रिजर्वेशन अनदर इशू था. और उससे भी बड़ी बात थी कि अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फाइल जानी है तो उसका पूरा बंच बनेगा, उसका कवरिंग लेटर बनेगा, फिर वो जाएगा, फिर वो आएगा, पेपर्स की नंबरिंग होगी, बहुत सारी चीजें थी. उसके अलावा फायर, फ्लड, इंसेक्ट फोर्स में रेट, फंगस, ये सब चीजें कॉमन थी. फाइल को अलमारी में रख दिया, पानी आ गया, ले गया, फाइल खो गई. और अगर एक पेपर है, अगर वो खो गया, उसका दूसरा डॉक्यूमेंट बना तो उसमें कंप्लीट फैक्ट्स नहीं आए. सर्कुलर्स और नोटिसेस ऑल्दो मास्टर फाइल में होते थे लेकिन वो एक ही जगह रहते थे, एक ही डिपार्टमेंट में रहता था, उनका शेयरिंग, उसका डिसेमिनेशन वाज अ बिग प्रॉब्लम. इसी को मद्देनजर रखते हुए 2009 में एनआईसी ने ये डिजिटल वर्क प्लेस सोल्यूशन, नॉट ओनली ई-ऑफिस को जो बनाया वो एक डिजिटल वर्क प्लेस सोल्यूशन की ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाया. The salient features is this is based on Central Secretariat Manual of e-office procedure, DAPRG, Government of India, CSE and DOPT यानी है. तो ये जो है ये सब जगह वैल्यूड, ये जो सिस्टम बना है ना, दिस इज एप्लीकेबल to PSUs, to societies, to government ministries, to attached offices, everywhere, क्योंकि core उसका same है. And then it enhances efficiency, transparency and accountability. चूंकि ये डिजिटल है तो ये पता चल जाता है किसने क्रिएट किया, फाइल कहाँ क्रिएट हुई, कहाँ पे है इस वक्त, इसमें जो नोटिंग है वो किस टाइम पे हुई, उसमें टाइम स्टैम्प आ जाती है, और एश्योर्ड रहता है कि कितना टाइम लगा. यू कैन मॉनिटर कि डिले है तो किस लेवल पे है, तो उससे एफिशिएंसी हमारी बढ़ती है. और उससे भी बड़ी बात कि पेड़ों का कटना कम होता है, क्योंकि हम फोकसेस टुवर्ड द लेस यूटिलाइजेशन ऑफ लेस पेपर्स कम. फाइल जो है वो डिजिटल मोड में इलेक्ट्रॉनिकली मूव करती है इस तरीके से कि जैसे मैनुअल में अगर आपको कोलैबोरेशन करना है, आपको शेयर करना है, तो दैट फैसिलिटी बीइंग डिजिटल इसमें इनहेरेंट है. फिर देन फास्ट ट्रैकिंग की वजह से हमारी जो है वो डिसीजन मेकिंग, गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो काफी हद तक, बहुत हद तक इम्प्रूव हुई है. ये पूरा जो सॉफ्टवेयर है, ये जो पूरा जो एप्लीकेशन है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर स्टैक पे बना है. जावा यूटिलाइज हुई है इसकी ई फाइल बनाने के लिए, और मोंगो डीबी है इसमें, पोस्टग्रेस हमने डेटाबेस यूज किया हुआ है. और ये जेनेरिक डिजाइन है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स, किसी भी लेवल पे यूज करेंगे. अगर एक जगह किसी ने यूज कर लिया, वो कहीं और भी जाएगा तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कोई नया प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ. इस ई ऑफिस कंपोनेंट्स जो है, ई ऑफिस के इतने कंपोनेंट्स हैं. फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो ई फाइल के थ्रू हैंडल होता है,
नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जो KMS के थ्रू होता है, लीव मैनेजमेंट सिस्टम जो लीव के थ्रू होता है, टूर मैनेजमेंट सिस्टम जो कि टूर के थ्रू होता है, कोलैबोरेशन एंड मैसेजिंग सिस्टम जो CAMS के थ्रू होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो PIMS के थ्रू होता है, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग ऑनलाइन ये स्पैरो के थ्रू होता है, और मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इन सब की MIS रिपोर्ट देता है। एज फार एज CSIR इज कंसर्न, CSIR ने लीव मैनेजमेंट और टूर मैनेजमेंट सिस्टम को छोड़ के बाकी सारे सिस्टम लिए हैं। CSIR has gone for eOffice Lite. eOffice Lite में फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम कॉम्प्लीमेंट्री है, और उसके संग कोलैबोरेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और eOffice Lite में स्पैरो सिस्टम है। E-फाइल और स्पैरो बेसिकली दो सेपरेट कंपोनेंट है। मैं आगे बताऊंगी आपको कि दोनों में क्या क्या फर्क है। और इन सब जो भी मॉड्यूल CSIR ने लिए हैं उसकी ये सारी MIS रिपोर्ट्स हैं, जो जब आप सिस्टम को देखेंगे तो उसमें जो रिपोर्ट्स कस्टमरी दी गई हैं उसके अलावा भी अगर डिमांड होगी तो NIC वो प्रोवाइड कराएगी। तो बेसिक जो CSIR के eOffice के बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो हो गए नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, वाओ पोर्टल, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, एंड दिस इज स्पैरो। Now, yes, any question here? Can I continue? Yeah, go ahead, madam. Okay. Now, coming back to file management system, or in short, we can say e-file process. Now, e-file process. I will request you to kindly mute your mic, please. Thank you. Now, coming back to file management system or e-file process. There is one disturbance. Mr. Rajiv Goel from CLI. Please switch off your mic, please. Yeah, please mute your mic if you are. डॉली जी कोई एडमिन होगा उनको बोलिए ना इसको म्यूट कर दें। हाँ, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, नाउ इट इज ओके। प्लीज कंटिन्यू रश्मि जी। Thank you, sir. राजीव गोयल जी प्लीज म्यूट योर माइक। Coming back to file management system, or in short we can say e-file process. Now this e-file process is workflow based system. Workflow based system I think you all know, but हो सकता है कि कुछ लोगों को ना पता हो, तो मैं अपनी तरफ से इसको elaborate करूंगी। Workflow based system means कि जैसे फाइल चलती है, किसी लेवल पे वो क्रिएट होगी, किसी लेवल पे वो डायराइज होगी, किसी लेवल पे वो डिस्पैच होगी, और किसी लेवल पे वो उसकी रिकॉर्ड कीपिंग होगी। तो पूरा का पूरा जो मैनुअल सिस्टम है जिस तरीके से वर्क करता है, ठीक उसी तरीके से इस ई-फाइल प्रोसेस बनाया गया है। ये हम कह सकते हैं कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम उसी तरीके से मैप्ड है। जब हमारे पास कोई रिसीट या लेटर आता है, नॉर्मली जब ऑफिस में कोई आता है किसी भी काम के लिए, तो वो या तो कोई लेटर लेके आएगा या कोई रिसीट कराने के लिए आएगा, तो वो इनवर्ट डॉक्यूमेंट हो गया, और उसका डायराइजेशन का पूरा मॉड्यूल है जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। सिमिलरली अगर कोई हमें नया काम करना है, या हमें कोई नई स्कीम करनी है, या कोई हमें नई डायरेक्शन से गवर्नमेंट की, तो उसके लिए हमें फाइल को क्रिएट करना है, तो फाइल क्रिएशन है। उसपे फिर वो उसमें नोटिंग होती है, उसमें ड्राफ्ट भी जाता है अप्रूवल के लिए। ये सारे काम उसी तरीके से जैसे कि हम मैनुअल सिस्टम में करते हैं, ठीक उसी तरीके से मेरी टेक्निकल टीम आपको बताएगी NIC की कि कैसे होता है। ये सारी चीजें वर्कफ्लो बेस्ड में ई-फाइल प्रोसेस में होता है। इसके साथ साथ जैसे कि हमारी फाइल एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाती है, ये भी इसमें वैसे ही मैप्ड है। इसमें सिर्फ एक ये कंडीशन है कि अगर एक डिपार्टमेंट से एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में जाती है, या इंटर डिपार्टमेंटल मूवमेंट होता है, तो ई-फाइल वहां पे भी इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए और यहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। दोनों जगह होना चाहिए, तभी फाइल्स मूव करेगी। और दोनों जगह जो सॉफ्टवेयर है उसका वर्जन भी सेम होना चाहिए। अगर एक जगह वर्जन लोअर है और दूसरी जगह वर्जन हायर है तो नहीं होगा। तो NIC इस बात का ख्याल रखती है जब आपसे पूछा जाता है कि आपका इंटर डिपार्टमेंटल फाइल मूवमेंट क्या होगा। सपोजिंगली CSIR की फाइल जाती है DSIR में, या DOPT में, या DAPRG में, या लैब की लाइन मिनिस्ट्री में, तो वो जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे मैप्ड होंगे। और अगर वहां पे eOffice इम्प्लीमेंट है तो उसका जो वर्जन है, वो जो CSIR ऑफिस में चल रहा है वर्जन,
उससे ये मैप किया जाएगा सो दैट आपका सीमलेस इंटर डिपार्टमेंटल मूवमेंट हो जाए फाइल्स का भी और रिसीव्स का भी. नाउ व्हेन यू सेंड द फाइल और यू डू अ नोटिंग और या आप उसमें कहीं साइन करते हैं मैनुअल सिस्टम में, तो आप पेन से साइन करते हैं. eOffice चूंकि वर्कफ्लो बेस्ड सिस्टम है, तो दैट फैसिलिटी हैज बीन गिवन टू यू बाय द फॉर्म ऑफ DSC. आप DSC यूज करके साइन कर सकते हैं. और ई साइन एज ऑफ नाउ NIC ने CSIR के लिए eOffice को फ्री दिया है एज पर द माइटी डायरेक्टिव्स. ई साइन आप लोग यूज कर सकते हैं एंड देयर इज अ लिमिट ऑफ दोज नंबर. जितनी ट्रांजेक्शंस होंगी, जब भी वो ट्रांजेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी, वो नंबर कंप्लीट हो जाएगा, तो आइदर यू विल गेट अ अलर्ट फ्रॉम NIC कि अब ये फ्री का कोटा खत्म हो रहा है, यू गो फॉर मतलब यू परचेज ई साइन जो CDEC देता है वो आप ले सकते हैं. और अगर अलर्ट नहीं आता तो यू कैन कंटिन्यू वेरी सेफली विद द ई साइन गिवन बाय द NIC. लेकिन इसको आपको यूज करना पड़ेगा. और अगर DSC है तो आप ई साइन यूज मत करिए. अगर आपके पास ई साइन है तो आप DSC को यूज मत करिए. इट इज योर चॉइस. एंड उसके संग संग वर्कफ्लो पे आप फाइल को सर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को रिसीट उसकी बनवा सकते हैं. और जब एक स्कीम पे, एक ऑब्जेक्टिव पे, एक टास्क पे आपका काम खत्म हो गया या ऑफिस का काम खत्म हो गया, तो हम उन फाइल्स को क्लोज भी कर सकते हैं. एंड दैट इज तो वो पार्क हो जाएगी फाइल. उसके बाद अगर आपको जरूरत हो तो आप निकाल लेंगे, बट वो फाइल आपका क्लोज होके रख जाएगा. नाउ दिस ये जो ई फाइल सिस्टम है, इसका बाहर की और एक्सटर्नल जो एप्लीकेशन है उससे भी इंटरफेस कर सकते हैं. जैसे इसकी वेरियस मॉड्यूल हैं, क्या कहते हैं आपके पिम्स है, या आपका क्या कहते हैं ई फाइल है. इसको आप बाहर की जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस हैं, आपकी इंटरनल CSI की भी हो सकती है, तो APIs के थ्रू आप जो भी पैरामीटर्स कॉमन हो या इसके पैरामीटर्स उसमें यूज करना चाहें तो आप, और उसके पैरामीटर्स इसमें लेना चाहें, जैसे आपके HRMS आप इंप्लीमेंट करना चाहें, तो पिम से सब्सटेंशियल डेटा आप वहां पे ले सकते हैं. तो आपका ये भी फायदा है इससे कि क्या कहते हैं आपका जो डेटा है वो सिंक में रहेगा और डुप्लीकेसी नहीं रहेगी. eOffice के पिम्स के बारे में मैं एक बात और अभी यहाँ पे बताना चाहूंगी कि eOffice चूंकि वेरियस मिनिस्ट्रीज में यूज हो रहा है, तो पिम्स में जो डेटा है वो यूनिक है. क्योंकि अगर सपोजिंगली JS सर हैं, हिज नेम इज श्री महेंद्र कुमार गुप्ता, तो वो चाहे रेलवेज मिनिस्ट्री में रहे, चाहे वो DOPT में रहे, चाहे वो कहीं पर भी रहे, दैट एंटिटी MK गुप्ता इज गोइंग टू बी यूनिक. वो सब जगह उनका एक ID बन गया तो बन गया, और उनके रोज सब जगह जो है वो चेंज होते चले जाएंगे. तो ये ब्यूटी है सिस्टम की पिम्स में कि डुप्लीकेसी नहीं होगी कि कहीं कोई मनोज कुमार लिख दे या महेंद्र को दरा लिख दे, मतलब स्पेलिंग्स का वो एक कंसिस्टेंसी सिंक इसमें रहेगा. इसकी वजह से पिम्स की वजह से रहेगा. नाउ कमिंग बैक टू ई फाइल सिस्टम. ई फाइल सिस्टम 3 पार्ट्स में है. एक तो आपका क्रिएशन, दिस इज क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, है ना. एंड ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है, दिस टेल्स अबाउट द रिसीट. हम 2 तरीके से यहाँ पे क्रिएट करते हैं. या तो हमारे पास कोई इन्वर्ट लेटर या रिसीट आ रहा है तो हम वहां से करते हैं, या फिर हम कोई नया जहां से हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं. आई एम स्टार्टिंग विद कि हमने कोई नई फाइल क्रिएट करी, और ये जो मेटा डेटा है, दिस इज डायराइजेशन. ये हमने उस ये न्यू फाइल के बारे में जितना भी हमें मिला, हमने उसको नई फाइल करके उसका नाम क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, और वो किस ईयर में खुल रही है, ये करती. जैसे ही वो फाइल खुलती है तो सिस्टम एक यूनिक उसको ई फाइल नंबर देता है. अब ये फाइल ओपन हो गई, अब उसमें नोटिंग स्टार्ट हो सकती है. ये जो आप इधर ये देख रहे हैं, इसमें ये नोटिंग वाला पार्ट है और ये कॉरेस्पॉन्डेंस वाला पार्ट है. तो नई फाइल में अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस रखनी है तो हम रख भी सकते हैं. अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है तो हम इसमें ड्राफ्ट भी रख सकते हैं कि ये है, और ये नोटिंग वाला पोर्शन उसको कैरी करेगा आगे. ओपन द फाइल, स्टार्ट नोटिंग, देन ड्राफ्ट को एडिट कर सकते हैं, ड्राफ्ट अप्रूव कर सकते हैं. उसके बाद ड्राफ्ट इशू हो सकता है. इसकी नोटिंग्स की रेफरेंसिंग होती है, ये टेक्निकल टीम आपको डिटेल में बताएगी. इसके बाद
ड्राफ्ट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस ये दोनों फाइल में रखी जाएगी। इस ये जो नोट है हमारा, ये जो नोटिंग साइट है, ये हम डिजिटली साइन कर सकते हैं डीएससी से या ई साइन से, और हम इसको वर्क फ्लो में जो हमारा नेक्स्ट यूजर है हम उसको आगे भेज सकते हैं। और ये उसी फाइल सिस्टम के चैनल से सबमिट होके यहाँ पे डिसीजन इस साइड में रिकॉर्ड होते चले जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस इस साइड में रखती चली जाएगी, और इस तरीके से ये फाइल जाएगी। अगर इस फाइल में हमें किसी को कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है लेटर के थ्रू, तो हम इस पे अपनी नोट साइड में रिकॉर्ड करके जो कॉरेस्पॉन्डेंट भेजी है उसको भेज के डिस्पैच करके यहाँ पे उसकी रिसीट वगैरह भी लगा सकते हैं। अगर हमारे पास बाहर से कोई रिसीट आई है तो हम उसको स्कैन करेंगे पहले रिसीट को या लेटर को, और उसको सेव करेंगे उसमें। उसके बाद जब हम फाइल बनाएंगे तो उसमें उसको अपलोड करेंगे, जो भी हमारे पास डिजिटल कॉपी हो गई। अगर वो पेपर हमारा खो भी जाता है तो हमारे पास ई ऑफिस में ये हमारे पास पूरा डिटेल है। उसके बाद हम उसके बारे में पूरा डायराइजेशन करेंगे, और फिर उसका वो डायरी नंबर जो है ई रिसीट के लिए हमारी जनरेट होगी, और ई रिसीट को हम बेच के उसको फाइल में स्टोर कर लेंगे। दिस इज द कंप्लीट वर्क फ्लो। नाउ हाँ, डायराइजेशन के लिए जो है इस तरीके से ये स्क्रीन आती है, और ये सारे पैरामीटर्स है कि डायरी डेट क्या है, रिसीट डेट क्या है, डिलीवरी मोड क्या है, उसके फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, लेटर है क्या है, इंग्लिश है, हम हिंदी में भी इसमें कर सकते हैं। लेटर डेट क्या है, उसका मोड किस तरीके से आया है, वो कोरियर से आया है, बाई हैंड आया है, या किसी डिपार्टमेंट से आया, सेंडर कैसा है, और वीआईपी रेफरेंस है। तो अगर आपको वीआईपी रेफरेंस की लिस्ट निकालनी हो तो इन्हीं पैरामीटर्स पे बेस निकलेगी, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट नेम, ऑर्गेनाइजेशन। तो हम जैसे छोटे छोटे मॉड्यूल बना लेते हैं, जैसे हमने डायरी का अलग बना लिया या हमने रिसीट का अलग बना लिया, तो ई ऑफिस वर्क प्लेस सिस्टम वर्क फ्लो से ये अलग अलग सिस्टम्स की हमें जरूरत नहीं है, ये इसका पूरा टेक केयर करता है। इसके बाद दिस इज क्रिएशन ऑफ फाइल, ये इसके पैरामीटर्स होते हैं फाइल में, कि हमने सब्जेक्ट लिखा यहाँ पे, फाइल नंबर, ये किस सब्जेक्ट किस ईयर में है, और आपका फाइल नंबर की कंपोनेंट है, फाइल हेडर होता है ना, उससे ये पूरी चीजें आती हैं। उसके बाद ये जिस डिवीजन की है, और ये डिस्क्रिप्शन उसका, मेन कैटेगरी, उसकी सब कैटेगरी क्या है, रिमार्क्स, अगर कोई अदर रिलेट डालना है, इसका अगर फाइल पार्ट्स में है तो प्रीवियस रेफरेंस क्या है, और बाद का अगर ये फाइल क्लोज हो रही है तो इसके बाद का रेफरेंस क्या है। ये क्रिएशन ऑफ फाइल इन ई ऑफिस, और ये पैरामीटर्स हैं कि हम यहाँ पे ब्राउज डायरेक्ट कर सकते हैं, इनबॉक्स में कौन सी फाइल आई देख सकते हैं, क्रिएट कितनी हुई, हमने भेजी कितनी, कितनों पे हमने एक्शन इनिशिएट किया, एक्नॉलेजमेंट कितने किया, हमने कितनी क्लोज कर दी, कौन सी हमारे साथ है, डिस्पैच कितने गए, कितने लेटर रिसीव हुए, कितनों में नोटिफिकेशन गए, माइग्रेट फाइल, ये टेक्निकल डिटेल अभी लेटर हाफ में होगा। इसके बाद ये सिस्टम को हम वर्क फ्रॉम एनीवेयर, सीएसआईआर ने हमारा है, ये है वाओ पेज है, परिचय के थ्रू हम इस पे लैंड करते हैं वाओ पेज पे। इसकी ब्यूटी ये भी है कि जैसे हम मैनुअल सिस्टम में क्या था कि हम ऑफिस में ही काम कर सकते थे, हम वाओ वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वाओ की वजह से हम इसमें कहीं से भी काम कर सकते हैं। आप अपने घर से छुट्टी में, मान लीजिए वर्कलोड ज्यादा है तो जिन को भी ऑथराइजेशन दे रखा है वो घर से काम कर सकते हैं। जब घर से काम करेंगे इसके लिए तो आपको एक वेब वीपीएन लेना पड़ेगा, जो ऑलमोस्ट जितने भी यूजर्स हैं सीएसआईआर ने सबको दिला दिए हैं, नहीं? तो और अगर आपके पास एक से ज्यादा, मोस्ट ऑफ द लोगों को ये घर से काम करने की जिनको परमिशन है या जरूरत पड़ती है, मोस्ट ऑफ दोस पीपल उनको वेब वीपीएन दिला दिए गए। तो वेब वीपीएन होगा, उसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो वर्क फ्रॉम ये वाओ की जो फैसिलिटी है, ये जेएसएन अबव के लोगों को दी गई है, या कुछ की पर्सन्स होंगे, जैसे डीजी के पीएस हो गए, या जो जितना मुझे पता है, सीएसआर नोज मच बेटर अबाउट इट, बट दिस इज द फैसिलिटी व्हिच आई वांटेड टू ब्रिंग इनटू योर नोटिस। जस्ट रश्मि जी ऐड करेंगे, आपने बताया वाव वाली फैसिलिटी, वाव की वर्क फ्रॉम एनीवेयर फैसिलिटी वेब वीपीएन थ्रू है, और वेब वीपीएन जिसको जरूरत होगी हम उनको देंगे, उसमें कोई मतलब कोई राशनिंग नहीं होगी। डॉली जी इसको देख लीजिए, लैब में जो लोग हैं उनको वेब वीपीएन फैसिलिटी लैब से मिलेगा या कैसे मिलेगा, इसको नहीं सर, उनका सर उनका हम ही कराएंगे, वी विल प्रोसेस देयर वेब वीपीएन, बट रश्मि जी इसमें ये क्लियर कर दीजिए कि एनआईसी की जो रिकमेंडेशन है, इट इज फॉर द अंडर सेक्रेटरी और अबव लेवल,
web Right, VPN is available only for the under secretary and Under above. secretary In and case above. other one, someone else wants, so he or she needs to take for the special approval from their heads or other senior, मतलब अगर अंडर सेक्रेटरी एंड competent सभी secretary. को अवेलेबल है, हाँ, इसका फायदा यह है कि कहीं से भी काम कर सकते हैं, ऑफिस में रहने की आवश्यकता नहीं है वेब वीपीएन के थ्रू। पहली बात यह है। इसका मतलब जिस किसी को भी एडमिनिस्ट्रेटिवली फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि कहीं से भी काम करने की, उनको हम अंडर सेक्रेटरी एंड अबव को तो मिल ही रहा है, उनके नीचे के अफसर को सेक्शन अफसर किसी पीएस को चाहिए तो उनको भी फैसिलिटी दी जा सकती है बेस्ड ऑन दी फंक्शनल रिक्वायरमेंट। हाँ, हाँ जी सर, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की उससे, बट माइटी रिकमेंड करता है कि अंडर सेक्रेटरी एंड अबव के लोग जो हैं घर से मतलब उनको एक्सेस दिया जाए, बट ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जो की लोग हैं मतलब इंपॉर्टेंट ऑफिसेज में उनको घर से दी जा सकती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद। जी, थैंक यू। एंड उसके बाद ये तो ई फाइल के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इज नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जब आप इस पे ई फाइल में काम करेंगे तो एक डिपॉजिटरी बनती चली जाएगी and that will aid in developing the life cycle of the in the proper storage and retrieval and tracking of the documents, and knowledge management system उसको aid करता है बनाने में। तो ये कहीं से भी उसको व्यू कर ले, सर्च कर ले, शेयर कर। जब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं तो उसमें से निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये आपके पास जियोज आते, गवर्नमेंट जियोज आते हैं, कुछ सर्कुलर्स हैं, कुछ एक्ट्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं। तो एक तरीके से ये पूरी एक मैनुअल्स हैं, ये पूरी एक डिपॉजिटरी बनाने की कोशिश करता है। और इस पे भी CSIR इज गोइंग टू वर्क, इस पे आगे अभी इसको टेकअप करेंगे जब ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा ई ऑफिस वाला। ये भी वर्क फ्लो बेस्ड है और इसमें आप यूजर्स जो हैं वो अगर ये देखना चाहे कि अगर हमें कोई स्कीम लानी है उसके लिए कोई गाइडलाइंस है तो क्या है, उससे पहले वाली गाइडलाइंस क्या थी, गाइडलाइंस में चेंज क्या हुआ है, तो वो सब चीजें यहाँ से कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक आपको पुल करके गाइडलाइंस में से कुछ निकालना है, पॉलिसीज में से निकालना है, तो वो APIs के थ्रू भी निकाला जा सकता है अगर उनकी जरूरत एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में पड़ रही हो तो, राइट। And this CSIR is going to take after eOffice is stabilized substantially. Now KMS के फीचर्स क्या है कि इसको भी इसके भी KMS जो है डिस्ट्रिक्टेड है, सबको नहीं है। इसका भी ऑथेंटिकेशन है सिंगल साइन ऑन के थ्रू। इसमें भी डॉक्यूमेंट वर्कफ्लो हैं, रोल्स हैं। फिर OCR बेस्ड इसमें सर्च है, अगर कोई कंटेंट है OCR बेस्ड तो उसको सर्च किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट को टैग किया जा सकता है, कैटेगरी, ऑर्गेनाइजेशन और उनके टाइप के बेसिस पे, और कस्टमाइज कंटेंट भी निकाला जा सकता है। इसमें भी सब्सक्रिप्शन एंड अलर्ट है। अगर आपको कोई नया आपके पास सर्कुलर आया है या आपको कोई उसके बेसिस पे अलर्ट भेजना है तो वन कैन सेंड इट। अगर उस डॉक्यूमेंट को उसमें जो KMS में कोई डॉक्यूमेंट है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो डेजिग्नेटेड यूजर्स के संग उनको शेयर भी किया जा सकता है। दैट इज ऑल अबाउट KMS। उसके बाद ई फाइल एंड KMS के अलावा अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफिस सूट की जो CSI ने ली है वो है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्टिंग सिस्टम ऑनलाइन विंडो विच इज स्पैरो। स्पैरो जो है वो हमारा जो असेसमेंट का जो पूरा सिस्टम है जिसके बेसिस पे प्रमोशंस वगैरह होते हैं ऑफिशियल्स के, वो पूरा वर्कफ्लो बेस्ड सिस्टम पे इसको मैप किया गया है। इट इज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन for processing of APAR, annual performance appraisal report। अब यहाँ पे एम्प्लॉय अपनी APAR भर सकता है, जो भी हम जो मैनुअल सिस्टम में भी करते हैं, अपने APAR भरी और भरने के बाद उसने अपना उसका ड्राफ्ट निकाला, उसको देखा कि मेरा ड्राफ्ट जो है सही है। जब वो कन्विंस हो जाए कि मैंने जो इसमें लिखा था, और अगर वो कोई अटैचमेंट लगाना चाहता है, इंपॉर्टेंट अटैचमेंट है, तो वो उसमें लगा के वो उसको फर्दर सबमिट कर देगा। वो जब वो सबमिट कर देगा तो इट विल गो टू हिज और हर रिपोर्टिंग ऑफिसर। रिपोर्टिंग ऑफिसर उसको देखेगा। रिपोर्टिंग ऑफिसर देखने के बाद अपना कमेंट्स लिखेगा, रेटिंग देनी होगी ग्रेडिंग देगा, जो उसकी ड्यूटी है वो करेगा और उसको सबमिट करेगा। ऑटोमेटिकली वर्क फ्लो में इट विल गो टू द रिव्यूइंग ऑफिसर, और रिव्यूइंग ऑफिसर के बाद अगर यहाँ पे एक्सेप्टिंग ऑफिसर है तो वो फर्दर हायरार्की में जो भी है एक्सेप्टिंग या वो उसको दे दे। इसकी ब्यूटी ये है कि
ये सबमिशन में और प्रोसेसिंग में कंसीडरेबल जो है वो रिडक्शन लाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लीगल केसेस देखेंगे तो वो प्रमोशन को लेके और अपने आप की ग्रेडिंग को लेके इतना टाइम वेस्ट होता है, लोग कोर्ट में जाते हैं करते हैं, लेकिन इवन इन एनआईसी में इस बार हमारे यहाँ रिकॉर्ड मतलब इतने 10 सालों में हमारे यहाँ भी इस बार इसको टारगेट करके किया, धीरे धीरे हमारे यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो रहा था बिल्कुल टाइमली। जो डीओबीटी की टाइमलाइन है उसके हिसाब से उस डेट पे रिपोर्टिंग ऑफिसर से, रिव्यूइंग ऑफिसर से और जो एप्लीकेंट है उससे और जो मतलब जो डेडलाइन थी वो एज इट इज उसी से पूरी हुई। और अगर किसी को रिप्रेजेंटेशन भी देना था तो वो भी टाइमली ही पूरा हुआ है। और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आई है कि जैसे ये बहुत होता था कि जो भी ऑफिशियल है उसने कुछ लिखा है और ग्रेडिंग है वो कुछ भी उसको लिख दिया, उसका कोई बेसिस नहीं है। बट नाउ सिंस इट इज मतलब डिजिटल फॉर्मेट में है तो वहाँ सारा है कि हमारे ये टारगेट पूरे हुए, हमें ये काम दिया गया था, तो एक रफली पिक्चर अपने आप ही वो दिखा देता है कि भाई ये इसकी ग्रेडिंग इतनी आनी चाहिए। तो वो एड भी करता है असेसमेंट में क्योंकि उसके सामने पूरी पेन पिक्चर अच्छी तरीके से होता है। मैनुअल सिस्टम में हम नहीं पढ़ सकते थे। तो ये अगर पूरी तरह इम्प्लीमेंट होगा तो सीएसआईआर का जो एफिशिएंसी है वो कंप्लीट मैं समझती हूँ इस साल के लिए हो जाना चाहिए। अगर जेएस सर का थोड़ा मतलब ये रहा कि इस साल करना है क्योंकि ऊपर से ही थोड़ा सा इसको करना पड़ता है तभी ये बढ़ेगा, क्योंकि जो एप्लीकेंट है वो तो टाइम लेता है लेकिन इट इज नॉट वेरी टफ। वन कैन जैसे हम अपना वर्ड में फाइल लिखते हैं उसी तरीके से हम अपना सबमिट कर सकते हैं टाइमली इसको। और इसमें एक डैशबोर्ड फैसिलिटी भी अवेलेबल करता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कि वो ये देख सके कितने ऑफिसर पोस्टेड हैं, पेंडेंसी किस लेवल पे हैं और कितनी अपार्स प्रोसेस हुई है। इसमें ये रिपोर्ट निकल जाती है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास कितनी पेंडिंग अपार्स हैं, रिव्यूइंग के पास कितनी पेंडिंग अपार है, कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जो टाइमली अपना काम ये असेसमेंट कर रहे हैं। मतलब ये वहां पे फिर एक मॉनिटरिंग हो जाती है तो करेक्टिव एक्शंस वहां पे लिए जा सकते हैं। तो आई थिंक विद इन दिस वीक ये स्पैरो भी यहाँ पे सीएसआर में स्टार्ट हो जाएगा। इट इज मैं रश्मि जिसमें ऐड करूंगा कि स्पैरो जो सिस्टम है जी सर। ये क्योंकि ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर के लागू हुआ है क्योंकि बिकॉज वी फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द डीओपीटी एज फार एज द performance appraisal system is concerned. For scientific and for the technical cadre, there are different guidelines, different procedure. Thus, I would like to clarify that for the administrative cadre, that means junior secretary assistant, senior secretary assistant, assistant section officer, PSS, सबके लिए जो है ये सिस्टम ऑपरेशनल हो चुका है। हाँ। तो for the year for the ACR which has become due from 1st April, तो we are issuing a detailed timeline, detailed guidelines कि वेरियस टाइमलाइंस इसमें क्या होंगी। थोड़ा डिलेड है 2 महीने लेकिन इसको हम जो है कंप्लीट कर लेंगे। सर ये डिले होने के बाद भी हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इट इज नॉट दैट टफ। इस साल में हम इसको कर सकते हैं। ये पहला साल है, दिस इज फर्स्ट ईयर, दिस इज फर्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर से इसको टाइम पे रहेगा। इस बार ऐसे भी तो लोग बहुत लेट लिखते थे पता है फिजिकल सिस्टम में, तो इसको जो है हम 31 दिसंबर के बाद तो मतलब उसके पहले कंप्लीट कर ही लेंगे इसको, इस चीज को। जी सर। एंड इसके बाद साइंटिफिक के लिए वो साइंटिफिक कई मिनिस्ट्रीज में है तो सीएसआर के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज किया जा सके जब वो आई। स्पैरो का प्रोसेस जो है वो ये कस्टोडियन है, ये कस्टोडियन के नीचे का प्रोसेस है पूरा कि असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट किया, जो ऑफिसर अपनी अपार भर रहा है उसने, फिर पीरियड ऑफ असेसमेंट जल्दी कर दीजिएगा इसमें क्योंकि अब स्पैरो सभी के लिए नहीं है, इसको अब जल्दी कर दीजिए ये प्रेजेंटेशन पार्ट। ठीक है सर। सर ये तो फिर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये मैं पीपीटी दूंगी कि ऑफिसर ने लिखा अपना, फिर अपना बड़ा चैनल के थ्रू पार्ट जनरेशन हुई, फिर ये बेसिक इंफॉर्मेशन उसमें जाती है कि कौन कौन इसको रिव्यू करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, फिर ये पार्ट डिस्क्लोज होती है रिप्रेजेंटेशन के लिए, एक्सेप्ट हो गया या रिप्रेजेंटेशन के लिए फिर एक्सेप्ट हो गई तो ये सर्विस कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास डोजियर में चली जाती है। कस्टोडियन इसको फिर आगे करता है और पार उस साल की उसकी क्लोज हो जाती है। एंड नाउ एक सर मैंने बोला था कि ई ऑफिस में जो है वो एक्सटर्नल जो सिस्टम्स हैं उससे इंटरफेस के थ्रू, तो ये एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का जो डेटा है, अगर सीएसआर में एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज हैं जैसे ईआरपी है या दूसरे एप्लीकेशन के, तो वो पिम्स का डेटा ले सकते हैं।
और एपीआई के आपको एनआईसी प्रोवाइड कराएगी इसके लिए। इसी तरह ई ऑफिस की अगर रिसीव क्रिएशन किसी और सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में या किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन में यूज करना चाहे, ग्रीवांस में या किसी में, तो वो भी कोर एपीआई प्रोवाइड कराएगी। और उसके बाद अगर उसके बाद एक्सटर्नल डैशबोर्ड का भी जो एक कॉम्प्रिहेंसिव समरी होती है, वो उसमें भी अगर आपको स्टैटिस्टिक्स चाहिए तो वो भी एपीआई के थ्रू एनआईसी कैन प्रोवाइड। और कुछ तो मिल रही है, अगर कुछ एक्स्ट्रा भी होगी तो एनआईसी विल सपोर्ट। अभी एज ऑफ नाउ ई फाइल ऑफिस का जो ई फाइल का जो इंस्टेंस है वो रेलटेल डेटा सेंटर के ऊपर है। स्पैरो जो है वो एनआईसी के डेटा सेंटर के ऊपर है, जो शास्त्री पार्क में है। eOffice application is there for approximately 10,000, some people less than 10,000 users, और जो स्पैरो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए, तो वो 2 समथिंग के लिए। इसका जो आउटकम है ई ऑफिस का, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जिस तरीके से क्विक डिसीजन मेकिंग इन फास्टर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, रिडक्शन इन करप्शन, लीनर प्रैक्टिसेस एंड टेपिज्म, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि पेजेस का यूज कम करता है। एंड फाइल्स आर ऑलवेज अवेलेबल, खोने का कोई सवाल नहीं। एक रिपोजिटरी है, क्लाउड बेस्ड है, तो ये भी नहीं कि इंडिविजुअल के हाथ में हो, वो कभी भी खो नहीं सकता, और लाइफ लॉन्ग ये स्टोर इसका रहेगा। सो दिस इज व्हाट वी गेट आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द ई ऑफिस। पेपर इज सेव्ड, प्रोडक्टिविटी इज एनहांस्ड, data security and integrity is there, accountability and transparency is there, quick decision making and faster processing. That is all. Thank you for your patient hearing, and thanks for giving me the opportunity to present before you the small concept which I am having regarding eOffice. Now I'll play before you a small film on eOffice that will summarize whatever I have presented before you. Rashmi madam, there is a hand raised by Dr. P. Jaishankar. I think he may like to have a query from you. Just one second. Yes, sir. Ma'am, it's really very fantastic moment for not only for CSIR, for the country. Thanks to JS and Dali ma'am and you for taking care of, for taking the initiative of the implementing the eOffice. I just would like to know whether there is also a separate package available for submission of a proper annual property statement. Actually, if you can make it online, is there any proposal? Thank you, ma'am. Yeah. अच्छा. Property statement. Yes, ma'am. Yes. अच्छा. That we can take care of, sir. नहीं, अभी नहीं है Otherwise, हाँ. रश्मि जी, Yes, this annual property statement is part of the Sparrow system. Mm-hmm. If I believe it is part of the Sparrow system, since Sparrow system is not operational for everyone, this annual property return is not available online to all the employees of CSIR. सर, स्पैरो सिस्टम में हम टिक करते हैं कि एनुअल प्रॉपर्टी ये आपने सबमिट किया है कि नहीं किया है, और किससे, बस केवल टिक आता है। हाँ, टिक आता है, नहीं इसमें अपलोड भी करते हैं। हाँ, IPR आप अपलोड भी करते हैं। You can upload the IPR also in that system, IPR system. Sir, EHRMS में EHRS में है, but presently जो डॉक्टर जयशंकर पूछ रहे हैं कि that whether this facility is there, this facility is presently not available. It's a sir offline kind of system, because this is the, I think, before filling the Sparrow form you have to fulfill it. They just confirm it whether you have filled or not, and you have to get it uploaded. It's a kind of offline system. Okay, so the form can be filled online. It needs to be uploaded online. I mean offline. I'm sorry. The form needs to be filled offline and then needs to be uploaded online. Is it what you are telling, ma'am? नहीं, अभी है क्या? रश्मि मैडम, नो फॉर्म अपलोड कर पाते हैं? नो, अभी अपलोड नहीं कर पाते हैं। अभी तो केवल उसमें जो प्रोविजन है वो ये है कि हैव यू सबमिटेड योर मैनुअली, हैव यू सबमिटेड योर दिस एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट और नॉट। दो एनआईसी में हमारे पास है ये सिस्टम, नॉट विद स्पैरो एंड eOffice, अलग से है।
तो that can be taken care of. अगर demand होगी तो we can think later on. That Okay, can be ma'am. तो provided. अभी नहीं है, कुल मिलाकर के to summarize As of it, now this नहीं है. facility As of now currently नहीं not है. available. हाँ, as of Thank you, now sir. नहीं है. Thank you. जी जी Thank you, जी ma'am. जी Thank you. Thank you. yes. Sir, that film I'm वैसे just ये वीडियो कितने मिनट का है? Because we have only 10 minutes more. only 5 minutes. Only no less than 5 minutes. Because we like to listen from the directors also, because we have one more meeting at 3 o'clock. हाँ सर बस हाँ. The National Informatics Center has been continuously working towards digital transformation of the entire government at the center, states, UTs and district level by influencing departments in adopting effective digital solutions. eOffice, being an integral part of the Digital India program, is the medium to achieve a simplified, responsive, effective, accountable, and transparent working in government offices. The speed and efficiency of eOffice not only assists departments in informed and quicker decision, but also makes them go paperless. eOffice product suite comprises of several applications transforming day-to-day official work-related activities of a government organization. Work from Anywhere portal, a gateway for virtual office from anywhere, is a one-stop portal for office functions and connects the officials to securely access their office from anywhere. File management system, a workflow-based, efficient electronic system covering all aspects of manual filing system. It involves all stages of working in file, including scanning, electronic diarization, file creation, noting creation, digital signing on noting and drafts, dispatch, faster processing and movement of files and receipts, closing of files and receipts, and finally, the archival of records. Knowledge management system brought the concept of a central repository of documents in an organization, where users can create and manage electronic documents that can be easily viewed, searched, shared, and published. Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window, a web-based application for processing of annual performance appraisal reports. It helps in reducing delays in submission and processing of APARs, ensuring transparency. eOffice is a digital workplace solution built on open architecture, making it a standard reusable product amenable for replication across the governments. It is based on Central Secretariat Manual of eOffice Procedure, CSMEOP, formulated by Department of Administrative Reforms and Public Grievances. eOffice is an environmental friendly and support to the Go Green initiative by saving the paper sheets, manpower resources, and infrastructure cost towards procurement of printers, cartridges, cupboards, office spaces, and transport. eOffice provides an effective monitoring mechanism to monitor the individual's performance by reducing dependency, thus leading to enhanced productivity. eOffice ensures assured data security and integrity by using highly secure web VPN technology, coupled with two-factor authentication with Panchay's single sign-on service, and by implementing robust audit trails, role-based access, and digital signing of files and APARs. The users working in eOffice are accountable for any action taken in the system, which helps in bringing transparency and accountability in the system. It also results in quick decision-making and faster processing of files, as it is a web-based application accessible from anywhere, anytime. eOffice is currently being adopted across the government ministries and departments in India as One India, One Product. During the COVID-19 pandemic in 2020, eOffice emerged as a game changer by facilitating unfettered and secure access to the files to government officials from anywhere. One of the major factors that have contributed to the growth of eOffice was the availability of interdepartmental file transfers through eOffice.
eOffice covers the entire gamut of office administration with the objective of governance with accountability, transparency, and innovation. Gati for eliminating delays in government offices. That's all from my side, sir. Thank you and good day to all. Rashmi, Thank you, Rashmi, Rashmi-ji. you please be there Is if there any any- query is there. I think we have 3-4 minutes. Is there any? Just would like to add one thing. I think that should have been mentioned in the beginning itself, because we have help desk facilities earmarked to each of the lab. It may not be dedicated one, but one help desk is available for a group of 2-3 labs. There, I hope all the labs know, and the nodal officers of the laboratories know the phone numbers, mail IDs, number, name, and number of the contact persons of the help desk, so that they can be approached for hand holding for migration from physical file to e-file. So I hope all the labs have that the number, contact details, and they are satisfactory. Please give your feedback also, that how their competence, they have been trained in eOffice, but their competence, etc., their usefulness, etc., we require the feedback. Please send your feedback to head IT Dolly ji. If there is any requirement of any change, any upgradation, more numbers are required, please, it is my request, please share your experience, your proposal with the headquarters. This is what I wanted to add. Thank you, Dolly ji. Yeah. If there is any query, there are hand raised from some officers, one by one we can take up. Director NBRI. Yeah, sir, Director NBRI. Dr. Ajit. Yes, sir. Actually, I was in ICR and they were working on eOffice. So I worked 2 years in eOffice. So I want to ask Ms. Rashmi that whether it will be the same thing or it is a different. I find this is a different platform. I don't know whether it is same or different. So I think you must have worked on EMD. Now there is PIMS. So this is definitely different. Different. They are having office management system and everything there, along with the Sparrow and ISRI and Unique, both you developed this Sparrow. So all for administrative and technical staff, they used to do that. So is that the same thing or it is a different one? It's a little different. Okay. Sir, Okay. Version has been changed, sir. Okay. Version has been changed. Because of upgradation, it has been Earlier it was upgraded. EMD. You must have worked on EMD, Employee Master Data. Now it is PIMS. So new Okay, features. but most of the features are same. Most of the features are same. Then it will be easy to pick up. All features are there. New features have been added, sir. Okay. Thank you. Dr. Srinivas Reddy is with me in my room, the director IICT. He has welcome Dr. Srinivas Reddy. So since he has one more important meeting with DG, so he has one question. Yes, please. Question to you also, this one. Yes, sir, please. No, basically, Knowledge is there. no, when I interacted with a few lab people, they are looking for some infrastructure. Most of the lab, they don't have that infrastructure, scanners and computers. So do you want us to take care from labs, or how do we, is there any support from headquarters side? I'm sure at least few of the labs, they expressed concern. There was query from one more lab. I will not name it here. But yes, I think no separate infrastructure is required for implementation of eOffice, because the computer which we are using for our normal office work, the same computer can be used for the eOffice. There is no separate upgradation required as such. If your computer is very old, it was not functional, it was not useful, that same may be replaced, though in a phased manner. You may not have budget to replace all the computers in one go, as I understood from one lab. But yes, if replacement is required, if system is very old, this can be done in phases. But for implementation of eOffice, separate computers, separate system is not required. Yeah. Sir, as far as I know, we have shared all the prerequisite, and that is not extraordinary requirement. That is, as JS sir has said, that is the same as the current version computers you are using, the latest version rather. So, and we have already shared the requirement. The only thing you may need to increase the number of scanners or something like that as per your lab's requirement. Nothing special. Actually, scanners will be required, because I will just add here, scanners will be required. What Dolly has said, scanners will be required
only for the purpose of migration of the physical file Yes. to e-file, because you'll Yes, got to sir. scan the notice side, the correspondence side, and upload on the e-file. But once all the files have been uploaded, Yeah. the requirement of scanner will go down drastically. Definitely. Gupta sir, good afternoon. Professor Arvind Mishra this side. Just I wanted to know, are we going to have some other software for leave management, or what are the plans? Because right now we are doing it manually. I will add here because leave management was earlier in the ERP, but since now ERP is not functioning, and Dolly and we are all working with DOPT to use this EHRMS, Electronic Human Resource Management System, which is being used by the central government offices, close to 40,000 to 50,000 employees of central government. They are using this EHRMS, and leave towards extra part of the EHRMS package. So once we are using this EHRMS, the leave management sector will be taken care of. But for the time being, since ERP is not there, I will request all the laboratories, please account for your leaves, etc., through physical means only, but that traditional means by using register, etc., so that accounting is done properly. When we migrate to EHRMS, then we will migrate for leave, etc., to EHRMS. EHRMS has many features we can discuss separately, including leave things. Okay, thank you, sir. Thank you. So just one comment, since most of the directors are there. So actually I'm part of this committee along with Dr. Pradeep Kumar. I request all people to take it seriously. This is we have a challenge of like 100 days. We are already now halfway mark. Like 1 month we completed now. I think let us take all of us challenge and let us do implementation of this. Yeah, So we have, in conclusion, I just wanted to add. I'm very happy he is here with me in my room, and that there are many labs we are really using more than 40%. I think I should not name any lab, but yes, appreciations are for many labs. I'm just not helping myself to NIST, Trivandrum and NIST Jurat, they are the toppers. Animal, CSM CRI, CMERI, SECRI, CBRI, SERC, they are all more than 30%. So I'm not naming only for name, but I think within a couple of days or by the end of this week, all the laboratories will be using this eOffice. Yeah. I think it is. I think directors. So I think, yeah, any more queries? Any queries from other I directors? think Director Siri has raised his. Yeah, I have a question. I have two questions from Madam Rasmi. In digital signing, you have two options. One is DSC, another is e-sign. Yeah. DSC is legally valid. Whether this e-sign is also legally valid? Yes, very much valid, Dr. Pinjaria. Okay. I think e-sign, I think Dr. Rasmi explained very beautifully that e-sign facility has been provided by NIC, and we have paid for that also. For e-sign, that using Aadhaar-based sign, you can use e-sign. E-sign is legally valid. Okay. Number two is. Sorry, Dr. Rasmi, I answer on your behalf. Am I correct, no? Yeah, sir. Yes. Yeah. In number two is that when there is some committees like purchase committee, TPC, and lot of committees are there, where you require multiple signatures. In normal file, there is 10 people sitting and they are signing. Okay. Is it possible to sign like one document to 10 people and collect multi-sign facilities? Just like we sign the files, the papers can be rotated through e-file and everybody can put their signature. I think so. Okay. Yeah. Yes. Thank you. Otherwise, another option is there in the minutes, get the signature and then upload the same minute. Yeah, that is also there, but that is physical mode. That is physical mode. Again, we are trying to go away from physical. Okay. Sir, see, I'm just excusing I have one question. Can I? Dr. Murmu? I think who is? I have one question. It's like, is there any timeline for file movement? All these things are inbuilt within the eOffice? No, there is no time movement inbuilt. But yes, we can observe that when file was opened and up to what time the file was with some officer, and that record is permanent record. So nobody can sign in a back date. No, it is going to be. I am excited about it. Let us see. So this is as far as I know, there are timelines. Ki file should not be there beyond this time. Yeah, 3 days. I think 3 days time is there. But nobody should hold the file for more than 3 days, 3 working days. But now e-file, there is no working day. It's a Saturday, Sunday. You can also work from your homes.
Okay. I will leave. Thank you so much. I will leave because I have one more meeting and then group is waiting. Thank you, Rashmi. Please carry on. Thank you, sir. But wonderful. This is wonderful, sir. This will be Thank wonderful. you. Yeah, Yeah, thank you. definitely, Dr. Ajit. It's wonderful. Thank you so much. Thank you. Thank you, Please carry everyone. on, Dr. Rashmi ji. Yeah, for having a Thank- patience to listen this Next, overview of eOffice, please. Thank you, everyone. Yeah. Thank you. Thank you. Ma'am, I have only sir, one question. next we are going to have a detail. Is there anyone wants to ask something? Yes, ma'am. I just wanted to ask one thing. We were having the leave records and the details online CSR portal. When we are going to revive, are we going to revive those things, or we are going to capture those data into the new system which you are going to be developing? Dr. Jaishankar, this Yeah. is not the scope in today's discussion. We will discuss something someday else. Separately. Anything on eOffice, please? I think now we can start. I'll request Rashmi madam. I think Akshay is going to. Next we are going to have a Hands-on training of the nodal officer. hands-on training So, of anyone who yeah, wants Rashmi, to. you can hand over to that. Who wants जितना to? जल्दी करेंगे उतना अच्छा है, हमारे लिए अच्छा होगा. अच्छा ठीक. Okay, just one second. Nice. Thank you. Akshay. Akshay. Yes, madam. Am I Yes. audible, madam? Yeah. Now, from my team, Akshay, Mr. Akshay is there, who is a technical lead, and he will explain the complete software suite before you, how it works and how the system will go on. Carry on, Akshay. Good luck. Thank you, madam. Thank you. So, a very good afternoon. My name is Akshay Sharma, and I'm from eOffice Project Division. So, let me share my screen, and we'll start with the session. So, in this particular session, I'll be presenting starting from the login till the diary. After that, we will also talk about the correspondence, how to put that correspondence in a file, and so on. And finally, till dispatch. Give me a moment. Let me share my screen and then we'll start. So I hope my screen is visible. Yes, it is my- visible. Okay. So for the login part, you have to open any of the browsers in your system, like Mozilla, Chrome. Mozilla Firefox is recommended. After opening, you have to enter your URL, that is eoffice.csir.res.in, and you will land up on a Parichay page. You have to enter your login details and your password here. Click on next, and after that, you will get an OTP. Entering the OTP, you will land up on this particular home page or the portal page, or you can also say the WoW portal. So this WoW portal is available to all. This WoW portal, anyone who logs in will land up on this home page or the portal page, as we say. In the center, we have the central console. So what is the central console? Central console contains the media gallery, the e-file, the to-do list, the notice board. It is kind of a console wherein you can see, okay, how many files you have received, how many receipts you have received. On the notice board, like all the departments have a notice board. On the notice board, we have the circulars, the office orders, all the documents which are for the whole department. So here you can have a notice board, plus you will also have a central or your specific repository. What do I mean by repository? You can also store a document here. You can also share a document from here. You can also publish a document from here, which can be viewed to the whole department. Okay. On the right hand side, you have this option of Teams, wherein if I talk about a specific section,
A section officer, all the ASOs would be there. If I talk about an officer, the director sirs, the director sir and his or her PA, PS would be here. Okay, from here you can do a video meet, mail, message, or even assign a task from here itself. On the top, you have the option of set status, wherein if you are occupied with some work, you can specify it here. If you're in a meeting, on a tea break, on a lunch break, or you're busy with anything, or any other kind of uh, uh, meetings, you can mention it here and take a break. Okay. On the left hand side, you have the option various different modules. As ma'am has already told you about the e-file, the knowledge management system, they are all on the left here. Okay. So for the e-file, I click on the e-file option and I will land up on the e-file page. This is the e-file page. Okay. This is your inbox. So I'll start with the receipt, then we will move on to the file, and finally the issue or dispatch part. Okay. On the top, you have the shortcuts for receipt, for file, and the dispatch or issue. If I click here on the navigation bar, you have all the options. So for receipt, these are all the options. Here is the shortcut. These are the most commonly used options. For the file, similarly, you have all the options here. And for the dispatch, you have all the options here. Okay. Plus, you also have a dashboard like this, wherein you'll see the file details, the receipt details, the login details, if any alert or notification, and so on. So let us start with the diary part. For the diary process, under the receipt option, you have an option of electronic. Click on it. After clicking on it, you will land up on this particular diary page. For the diary, if you're getting any of the correspondence or any of the data physically, first thing first, you need to scan it. Okay, scanning can be done with some specific conditions. So if you want to scan, because there is a 20 MB upload limit. So for scanning, make sure that it is scanned, the document is scanned in grayscale, and it is scanned in between 100 to 120 dpi's. Okay. After the scanning is done, you need to upload that document, that doc that you have received. After the document is uploaded here, we need to fill in the diary details, the contact details, and the category and subject. So what is this diary detail? I'll elaborate a little bit on it, field by field. So the first field says the diary date. So it is automatically fetched. We cannot change it. So it is the date on which we are diarizing this doc. Okay. Then comes the forms of communication. What kind of communication it is? So it can be minutes of meeting, any note, any document, any office memorandum, any order, any interim reply, guidelines, final reply, any bills, any circulars. Basically, what kind of document? If it is a letter, you specify letter. If it is a document, specify document, and so on. Then comes the language. In which language this letter, this document, this office order is? Specify the language. Then comes the received date. On which date did you receive this particular letter or this particular document? So suppose I say I received this letter Friday. Okay. Then comes the letter date. What is the date printed on that letter or written on that letter? I say 12th. Okay. Then comes the letter reference number. Letter reference number can be any reference number that is written or printed on the letter. If it is there, you mention it here. If not, you can leave it. Only the fields marked with a red asterisk are the ones which are mandatory to fill. Okay.
Moving ahead, then comes the delivery mode. How this letter, this document, this doc has been delivered by hand, by courier, by diplomatic bag, by email, by ordinary post, registered post, and so on. What is the mode number? Mode number is the tracking number. If this particular letter has been received using speed post or ordinary post, there should be a tracking number. If you know that tracking number written on the envelope, you can mention it here. Then comes the VIP. If this particular document or this particular letter has been received from any VIP person, here is a list of the VIP persons. In case any of the VIP is missing that you frequently communicate with, all of the drop downs are customizable. Okay, so the admin will be able to customize it and add the VIP person here. Then comes the contact details, from which ministry departments, or if it is from any citizen, you can mention others. So in case you have received this from ministry, so here is the list of ministries. In case of any department, here is the list of all the departments. In case you received it from any private player or any citizen of India, you can mention others. Okay. So for now, I'm mentioning ministry here. Okay. Then the name of the person or name of the sender. Okay. So then comes the designation. Either name or designation is mandatory. Okay. Then comes the address. Then we have the category and subject. Select the main category of the doc or the document. Give the subject. In case of any enclosures or remarks, mention the enclosures or remarks here. Okay. Then comes the option of generate and send, generate and copy. Click on generate. And the doc has been diarized in the system. So you have diarized this particular doc that you have received in eOffice. What comes the next step? So either this doc needs to be sent to the concerned person, to the concerned officer, so that he or she will open the file, or this doc or this receipt is currently with the officer who will open the file. Okay. So here are 2 to 3 options that I'll explain first, then I'll explain all the options here. Number 1, if this doc or this receipt needs to be sent to the concerned person, okay, then I have the option of send. Just need to write the name of the person to whom I have to send this receipt. Okay. And if there is an option of CC also, if this particular receipt needs to be sent to more than one person, I can mark it easily by writing down the name. In case of any remarks, I can mention the remarks here. Priority, I can set the priority from here. I can click on send and the receipt would be marked to Robin Chauhan and a copy of it would be marked to Kapil Kaushik and Arjun Singh. Okay. Next is the second option that is called put in a file. So if I want this receipt to be put in a file as a correspondence, so this is the way. I click on put in a file. These are my existing files which are currently with me. So physically, if you think about it, a file should be on my table to actually attach any correspondence to it. If the file is under submission, I cannot attach till the time the file comes back to me. If I talk about this physically in physical terms, in the manual term, if the file is currently with me, only then I'll be able to attach any correspondence to my file. If the file is under submission, if that is the scenario in the manual procedure,
I won't be able till the time the file comes back. The similar thing is being followed here. As eOffice is completely based upon CSMOP, Central Secretariat Manual of Office Procedures, we follow the complete methodology that is used to be followed in government. So these are the files which are currently with me. Okay, in my inbox. And I have to give the remarks. I click on attach. This is the first option. If I want to create a new file, I can click on create file, the option from here, create a new file. Okay. Third thing, if you want to close this particular receipt, because all of the receipts need not to be kept. Some of the receipts are just for information and they need to be closed. So for the closing of any of the receipt, you click on close option, give the remarks, click on OK. You can close this receipt. Okay. Understand there is no option of deleting any receipt once it has been diarized. There is no option of deleting. There is the option of closing the receipt. Any questions? Okay, no questions, then we'll move ahead. So 3 things I have told you: send, put in a file, close. I'll tell you some more things. Movement. If you want to check who sent this receipt, on which date, with what action, with what remarks, you can actually check the history of the movement by clicking on movement. किसने फाइल भेजी, किसको भेजी, कब भेजी, किस रिमार्क्स के साथ भेजी, कितने बजे भेजी, all the movement history. Okay. Next comes the edit part. If you want to change any of the metadata, by metadata I mean the field. If you want to change any of the field, you can change it. Understand, you can only change the document till the time no movement has been done. So once the movement has taken place, you cannot change the document. If you have sent this particular receipt or mark this particular receipt to anyone or any other person, then you cannot change the document. You cannot remove the document. Okay. Although you can change the metadata, but you cannot change the document once it has been sent. Second, if you have put this receipt in a file as a correspondence, you cannot change the document after that. So either of two. If you have moved this receipt to someone, mark this receipt to someone, or put in a file this particular receipt, you cannot change the document. Okay. Moving ahead. Then we have the option of generate acknowledgement. If you want to generate an acknowledgement for this particular receipt and send that acknowledgement to the sender, you click on generate acknowledgement, write down your acknowledgement, mentioning the proper receipt number and sending a proper acknowledgement. Click on continue. And then signing it and dispatching it to the concerned person. Okay. Any questions? If any questions, kindly let me know. Any questions, anyone? Hello. Hanji, please. If the file size is more than 20 MB, how you break it? Yes. If, as I have told you, please try to scan it in grayscale and in between 100 to 120 dpis.
You can scan approximately 600 to 700 pages within 20 MBs. Okay. Grayscale, by grayscale, I mean black and white. Okay. Okay, sir. So within 20 MBs, more than 600 to 700 pages can be scanned if you use both the conditions that I specified here. If this particular receipt is a standalone receipt, that means this receipt needs not to be attached in any of the file, but a reply should be given against this receipt. If that is a scenario, then we have this option of creating a draft, and you can create a draft against this receipt and send it, dispatch it. Okay, you can do it from here. This draft option is also available in file, so I will explain to you this draft option in file. Okay. I have one question here. Yes, yes, please. Yeah, how to bring the digital signature into this this page? Which page, sir? If we already have a digital signature, how will we put it here? Okay, if you have a digital signature, how to put it here? Okay, sir. As we are talking about this receipt part, when you are sending this receipt, here comes the option of digital signature, the DSC and the e-sign. Okay. This is just the receipt part. I'll be coming to the file part where you'll have the noting also. You'll sign on the noting. You'll have the draft also while dispatching. You'll sign the draft also. So that is in file option. I'm just talking about the receipt part. Okay. In the receipt, if you want to send with e-sign or DSC sign, here is the option. Click on send. Type the name. You'll have both the options. Okay. I hope this answers your query, sir. Sir, we are from CSR CFTR, right? I have a query, sir. Sir, this e-sign and as well as this DSC sign is available for all the users on this e-file? Yes, ma'am. Okay. Now, whether it is restricted to only specific this thing authorities, some like based on delegation of power or something like that, whether the signature is it is available for all the users. Whosoever has been issued a DSC, and if the e-sign facility is taken, I suppose the e-sign facility has been taken by your department, so it will be available to all. Nothing specific to any rank or designation. It will be available to all, madam. Okay, thank you, sir. Thank you. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Suppose you want to attach more than one file to this receipt, and then you want to dispatch only that. Only one file can be attached at a time. So make sure that you're scanning it with the conditions that I have told. Grayscale and 100 to 120 dpi. You'll scan almost 600 to 700 pages, sir. Okay. Yes, sir. So is there any option for sending the file without e-signature? Means, yeah, is that possible? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Why not, sir? I see. No, in that case, basically, in that case, the sanctity of the file, how it can be maintained by the user ID password, whatever means. Yes, sir. See, sir. Through that account. Yes, sir. Authentication is done using your GOV or NIC mail IDs. Okay. Right. Or your CSIR mail IDs, which is a government institution. So first authentication is maintained here, and the sanctity is maintained likewise. If you further want it to be legally secure and authentication should be done properly, if that needs to be done, you have the option of DSC sign and e-sign. If you want, you can sign it and send it, which is always recommended. So without signature means e-sign also people can transfer the file, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We have this provision. And that is legally valid. Sir, as far as legal is concerned,
I won't be able Means to comment on legal, legally. I mean officially. Officially, it is valid, sir. Okay, fine. Officially, it is valid. So just one clarification here. Yes, there is a difference between DSC and e-sign, right? So DSC is only given to people who have authorization, like NIC is a thing, and whereas e-sign, I believe anybody from CSIR, since we have been given an option, we can do it, use it. Is that correct in our understanding? Madam, what I'll do, I'll just give you a proper understanding for both e-sign and DSC sign. What are these things? E-sign, DSC sign is simply a dongle that you have been given. You put that dongle in your system, you provide the pin, and you'll be able to sign. Okay. E-sign is Aadhaar based sign, madam. Okay. It uses your Aadhaar card, your Aadhaar number for authentication, and then it will take the data from the CDAC website and make sure that the person who is signing and your name on the Aadhaar, it matches, the detail matches basically, and the same person is signing. So e-sign works using the Aadhaar. This is the difference between the two. Now you can repeat the question so that I can answer it. No, thank you. I think I got it. Okay, ma'am. Okay. So any more questions? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Please. Sir, this is Abhigna from 4PI. Sir, yes, sir. query is regarding creation of account and assigning roles, sir. We have to create account for all the employees, no? Sir, for any of the queries related to admin part of the eOffice, your nodal coordinator or the person or the CSIR department, the head office, will be able to help for that. Oh, okay. And then this e-signing, it will be provided by CSIR? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. For that, you have to talk to CSIR headquarters, sir. Okay, right. Thank you, sir. Okay. So I'll move ahead. In case of any queries related to e-file, you can ask. Else we'll move ahead. Okay. So this is regarding the receipt part. One more thing that I want to tell you. Just understand it. I am giving you a small analogy so that you can relate. तो मैं आपको एक छोटी सी analogy देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे you'll be able to relate the options that you see here and the options you have on your email. So everyone is using email. Okay. In the email you have an inbox, you have a created or a draft as we call it, you have a sent, and you have a delete or a recycle bin. So in inbox, what all emails do you receive? Firstly, you receive all the emails in your inbox. Okay, similarly, here in eOffice, in this inbox, you will receive all the receipts that somebody is marking to you. Then you have the create option. It is just like your draft folder in your emails. Any receipt that you are diarizing lands up here till the time you don't send it. Till the time you don't send any draft email to any person, it remains in your draft. Once you send it, it moves from your draft to send. Okay. Sent is a copy of the receipts that you have sent. Okay. Close is all the receipts that you have closed. I hope this is clear so that we can move ahead. Yes, it is clear. Okay, then we'll move ahead and see the file part. For creating or opening a new file, very simple. Under the file shortcut, you click on create. You will land up on the file cover. Okay. File cover, you select the file heads. Okay. After selecting the file heads, give the subject of the file.
Okay. Click on continue working. Click on proceed. A file will open. One more thing. The nature is electronic and the file is of non-SFS. Non-SFS is I am able to select the heads. SFS is I have to manually type the file number. Okay, this is the difference. Non-SFS is non-single filing system. SFS is single filing system. Click on continue working. Click on proceed. File is open. This is a new file that I created or opened just now. Left hand side, noting side, right hand side, the correspondence side. Now, how to attach any correspondence here in your file? How to do that? Very easy. You click on this 3-line button. Click on TOC. TOC means table of correspondence. Okay. Click on 3-line button. Click on TOC. After that, click on add receipt. Here are all your receipts. Okay, you select the receipts that needs to be attached in this particular file. Give the remarks. Okay. Secondly, if you want to change the order in which you have attached these particular receipts in your file, you can change the order of the receipts also. If you want this particular receipt 8757 to be the first receipt and this 8750 to be the second receipt and the 8963 to be the third receipt in your file, you can attach it in a specific order if you want. Just click on attach and these 3 receipts are attached to your file as a correspondence. Sir, how many attachments we can attach? How many files we can attach to the? There is no limit to that, ma'am. Okay. Yes. Thank you. So you can attach n number of receipts at a time to a file. Okay. If you want, you can attach 50 receipts at a time. If you want, you can attach 100 receipts at a time. Okay, it is just this, that in order to view all the receipts on the same page, you have to manually select the number of receipts that you're able to see on a single page. And the maximum receipts that can be viewed on a single page is 50. Okay, so you have to manually select and then scroll if you have more than one receipt or more than 50 receipts that needs to be attached at a single point of time. Moving ahead, now comes the noting part, how we will do the noting. So in order to do the noting part, you click on add green note and you can simply start writing your note. One more thing, in order to see the receipts, the correspondence, just click on the receipt number and the correspondence would open up, because you will require the correspondence also. So what you can do, you can also use the copy paste option. You can copy and paste the content of the document or the correspondence directly from here to here. Okay. So this is the procedure of writing the correspondence to a file. Okay. One more thing that I want to tell. If you want to use any quick notings, by quick notings I mean any one-liners in your noting, you can just specify standard, and these are the one-liners. These are the one-liners in Hindi as well, or any user-defined. If you want to use a specific terminology or specific line or sentence, and you use it very frequently, you can
Just mention it like this. Okay. So this is the procedure of attaching any correspondence or adding any correspondence to a file. And this is how we can write on a green sheet. Okay. How to add the user-defined note, quick noting? Is there any option? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. I'll show you the option. So for any user-defined noting or user-defined quick noting, the option comes here under the setting, quick noting, and you will be able to add. Just choose the language. So if you want to add this quick noting in English, just write down the content, click on add. That's it. So automatic translation will also work, right? Sir, translation, this is for any regional language that you're using, but for that you have to use the indic tool. Only there. Okay. Let me edit. This is the first note I wanted to add. Click on add, and now this particular note has been added to my list of quick notings. Okay. This is one of the small features that is there. So for in the quick notings, user defined, English, and here it is. Okay. Second thing, next comes the part that I'll be telling you about flagging or referencing. Okay. I hope everyone is using flagging and referencing. How to do flagging or referencing in eOffice. Now I'll be telling you about this. So this part is important. I hope everyone is listening to this part, specifically this part, with utmost attention. Number one comes the node-to-node flagging. So what is node-to-node flagging? When I'm flagging my current note that I'm writing, the screen note, to any previous notes that has been written by any of the officers or any of the section officers or ASOs or anyone in your department, any of the labs. So what is node-to-node flagging? I have written down this particular note. So let me write down, please refer to page number or note number 1, para 2. I've written this, or para 1 I say. I've written this. I want to flag it to or reference it to note number 1, that I click on it and note number 1 should open up. So manually we must have been using the sticky notes for the flagging or referencing. Here we have this option. So I first, how to do the node-to-node flagging. You write down your content and whatever part that you want to flag, you just select it like I have selected. Okay, select it. Second step, you open the previous noting on the right hand side. Okay, 3-line button, click on it, click on previous note. Okay, let me flag it to note number 2. Para 1. Okay, select it, open the previous noting using this 3-line button. Now take your cursor where you want to do the flagging. Right click, you have this option of refer this note, refer this paragraph, download this note and view note FAQ. Click on refer this paragraph. Referencing done. If you click on it, note number 2, para 1 should open up like this. I hope you can see. Is my screen visible? And I hope you are able to see this. Yes.
Could you repeat this step, please? Yes, sir. Yes, sir. I'll repeat it once again. Write down the content, select the content. On the right hand side, click on 3-line button. Click on previous note. Select the part which you want to reference. So if I take the cursor here, so I want to refer this first paragraph. Just take the cursor there. It would automatically come highlighted. Right click on refer this paragraph, and you will get a success message like referencing done successfully. If you want to check, just click on the referencing part that you have done. I hope this is clear. Yes, it is clear. There is a second type of referencing also. So we were talking about node to node flagging. There is node to correspondence flagging also. So what is node to correspondence flagging? Anyone from the department who wants to answer this question? What is node to correspondence flagging or node to correspondence referencing? Anyone? I have a doubt here. Yes, madam. Yes, please. Sir, now you're referring to some part of the text in one noting, no, sir? This other notings will be stored like whatever the earlier notings you have put up from your login, those notings will be available in this box, in this previous notes. Whosoever is writing their comments on the green sheet, all their notings will be available. All irrespective of other logins also, sir, other users notings also. Yes, madam. Yes, madam. You cannot change this. You are not able, you won't be able to edit any of this. You will only be able to edit your own noting till the time you don't send it. After you have sent the file, you won't be able to change your own noting once the file has been sent. Sir, in that case, then so many notings will be available. How we can hit to the correct noting, sir, then? Any search option or something is there, sir? Yes, madam. Very good question, ma'am, that you have asked. So there is an option of filter here. If you want to see any of the note written by any specific person, okay, so you can also filter out. Okay, if you want to see if your director, what the director have written on the note sheet, and you just want to flag his or her sir or madam's noting reference to just that, so you can select it from here. Plus you have also the option if you want to do it in ascending or descending. Suppose there are 5,000 notes written on this previous noting and you want to refer it to the 10th note. So instead of just using the scroll, you have this option of ascending or descending. Okay. Okay, ma'am. Okay. So okay, sir. Thank you. Just don't. Yes. Anyone have this idea of what is node to correspondence flagging? Kindly let me know. If anyone has any idea about what is node to correspondence flagging on reference node. As we require your involvement also in this session, please, if anyone. Sir, whether the correspondence what we have attached to that referring, sir? Yes, ma'am, exactly. You're correct. If you're whatever note or comment you're writing on your sheet, on your green sheet, if you're referencing any of the correspondence that has been attached to your file. So this is node to correspondence flagging. If I am flagging any of the correspondence to my current note, whatever I'm writing. So if I write please refer to page number 7 of the correspondence. Okay. So if you are flagging your current node to correspondence,
This is called note to correspondence flagging. How it is done? Now I will tell you. Select the content or the text like you have done in note to note flag. This time click on the 3-line button, click on all. Okay. Next step, click on referencing button here. Enter the page number, click on OK. It has been referenced or flagged successfully. So if you want to check, click on page number 7 and page number 7 would open up. So as you can see, this is page number 7. See, of the correspondence. Okay. I hope there are no questions in flagging part, as this is a very important part that I have told you. There are no questions in flagging. Then we will move ahead and see the other options. Okay. Next comes the option of draft. For the draft part, click on draft, click on create new draft. After clicking on create new draft, you can simply copy and paste your draft from Microsoft Word if you have created it in Word. Secondly, you can, if you're using any templates, you can also use a template and select the template from here. Okay. Thirdly, if you want, you can also upload the file from here. But understand that any of the file that has been uploaded, you won't be able to change it. You can only change it using by downloading the file and then making the necessary changes and re-uploading it. Okay, so it is always better to copy or paste the content here, the draft letter here, and then making the changes. Okay. Secondly, if you want this draft to be signed by multiple authorities, multiple signatory authorities, click on enable multi-sign. Okay. Thirdly, enter the draft details here. Okay, if it is a fresh draft or a reply or a reminder, against which receipt number, what is the document, if it is a DO letter, acknowledged letter, document, DO note, standing order, exactly what language it is in. Thirdly, you can also use your noting and the correspondence while creating this particular draft. If you want to see what all note, or if the note has been, if the draft has been you know if the draft has been mentioned here in the noting, or if you want to see any of the correspondence, you can also see that. You can also divide the page, see both at a time. Okay, so here is the small arrow button. Click on it, both will open up while creating the draft. Okay. After the draft has been created, click on save. Send the file to the concerned person. While sending also your current note, you can see from here that what you have written. You can also edit while you can also see your note while sending the file. So there is an option that, okay, this is the content on the note sheet that you're sending. Okay. And before sending also, you can just see your content. Okay, what exactly you have written. And you can see to it that if there are no grammatical mistakes or the content of the green sheet is correct. Just make sure that from here also you can see. So once the concerned person receives the file, he will open the file, see to the draft,
And this, madam, as initially madam has told you, this eOffice is a role-based system. If approve button will only be there for the concerned approving authorities. Not everyone will see this approve button. Only the concerned approving authorities, only the senior officers will see this approve button. You will, all the other employees will only see the option of edit review. That's it. Senior officers, whosoever is the approving authority, will see the option of approve here. We have given the specific role to the approving authorities in your departments and labs. And okay, so once approve is clicked here, you will get a pop-up message saying once the draft gets approved, no further changes can be made. Would you like to proceed further? Make sure that whatever draft, whatever reply that is being approved here by clicking on approve button here is the final version. Because once after approving, you cannot change the draft. Issue number is given to it and now changes cannot be done. Okay. Moving ahead. Hello, sir. Yes, madam, please. Sir, this you have to. You were just explaining about this draft procedure. Now, suppose a draft is made ready, and we have to take the consent from COA or something. Then, what is the procedure to hold it, sir, before approval? Means it is not completely approved. It may need some corrections or something after consulting with COA or higher authorities. Now, how to be in the state of before approval state? Ma'am, if you talk about the manual process till the draft is not approved, the draft can be edited multiple times. Yeah, that's what the now officer usually. Yes, ma'am. Similarly, here also, the to and fro movement of the file can be done till the time the approve button is not clicked. Okay, then so it will be saved. Versions, it will be saved in the. Created. Okay, it will be saved in Yes, the window then. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So here, I'll show you, ma'am. So as here, ma'am, versions would be created till the time it has not been approved. Okay. Version 1, version 2, version 3. If I make any changes, version 1 is created. If I send it to my boss and he makes any changes, version 2 is created. And further, till the time the concerned approving authority says, okay, this is correct, now we can approve this. So that version will be automatically, once he clicks on approve, that version will automatically be finalized. Okay, this is the final version. Okay, fine. All the versions are saved here only, ma'am. You will be able to see all the versions from here. Okay. So it is not this that all the versions are lost or they are, it is just this that the final approved version will only be dispatched, but you will be able to see all the versions of the draft. Okay, sir. Fine. Thank you, sir. Okay, madam. Moving ahead. So this is the final version which has been approved. Now comes the next part. So the concerned officer or the approving authority, after approving it, will send it to the signatory authority, or he might be the signatory authority or him or herself. If that is the scenario, there is the option of e-sign, DAC sign, ink sign, 3 kinds of signatures. So if the officer or signatory officer clicks on e-sign, he will be able to sign this document using his Aadhaar. If he clicks or he or she clicks on the DAC sign, he or she, the concerned signatory authority, will be able to sign using the digital signature certificate or the dongle that he put in his or her system and giving the pin, he or she will be able to sign. Then comes the third option, ink sign. So what is this ink sign? Ink sign is basically physical sign. Sometimes in the court cases matter, some of the documents needs to be signed physically. If that is the scenario, we also have the provision of ink sign, wherein you take out the printout of this
document by clicking on download, getting a printout. After getting the printout of this document, you get it signed from the concerned signatory officer authority. Okay. After getting it signed, you come back here on the in the eOffice, get the signed document scanned firstly. After that, click on ink signed document. Okay, and upload the document here. Then you'll have the option of confirm discarding sign. Make sure that the signed document is here and the signature are present. The physical signature are present. The pen, proper ink sign is present here. Ink signature. Make sure this is a signed copy as it has been written on the top. Left hand side is the approved copy. Make sure that the signature is present here. Once you click on confirm, you will have the signed copy replace the approved copy. Next is initiate dispatch. So it is a step-by-step process. Till the time the reply or the draft has not been approved, you won't be able to sign it. Once it is approved and signed, you will be able to dispatch it. So for dispatch, approval and signature is mandatory. We have two options: send dispatch with follow-up, send dispatch without follow-up. What is the send dispatch with follow-up, without follow-up? I'll tell you in a bit. Before that, you have the option of add recipients to whom you're sending out these reply. आप जिसको भी reply भेज रहे हैं, whosoever you're sending out these replies to, you have to enter their details here. Okay. If you're sending it outside CSIR, the department, the complete department, use the option of public. Okay. For example, if you're sending this particular letter or this particular reply or this particular draft to any of the ministry or any of the department, mention the name of the ministry here, the name of the concerned person here, the address here, and all the details that has been marked mandatory. Okay. Second, there is a concept of address book. You can maintain your address book. Okay, and click on that. I'll tell you address book option in the last part. Okay. Then we have the option of intra eOffice. What is this intra eOffice? Intra eOffice is anyone from CSIR department, any labs, anyone. So if headquarter is sending any reply to any of the labs, they'll simply select intra eOffice, search the name of the person to whom they're sending it, select the name of the person, click on add. Internally, if CSIR is sending any of the document within the CSIR instance, you can select it, write the name, select it, and it won't ask you any details. Even it will even provide you the complete list of your instance. If you're sending it outside CSIR, outside all the labs, outside the headquarter, any of the ministry departments or any other person, you select it from here. Okay. Then we have the option of send with follow-up, without follow-up. What is this with follow-up, without follow-up? I'll tell you. This is for the physical dispatch.
And this is the electronic. For electronic, you click on @ E option here. Give the subject. Give the body. Okay. What is this send with follow-up, without follow-up? You're setting up a follow-up for your own self. For example, on this particular draft, a reply is sought, and so you suppose you are asking for some information, and you expect a reply within next 15 days. So you are putting an alert for your own self, so that after 15 days, you don't forget, and you'll have a notification here. Okay, so that telling you that you have requested a reply, 15 days ago. You sent this particular document or this particular draft, and you are expecting a reply for it. So you are setting up a follow-up with you for your own self. Okay, and you can send or dispatch with follow-up, without follow-up. Automatically an office copy of that particular reply will be put up in your correspondence site. So I open the particular file and I see, oh, an office copy has been attached to my correspondence site. So now, any questions in the file part? Any questions? Any questions, kindly let me know. Okay, I suppose there are no questions. I hope my audio and Hello, my... sir. Yes, madam. Yes, madam. Sir, can we mark a copy? Copy of what, ma'am? Means the same draft, like the same thing, we have to send to a multiple recipients as a like carbon copy we say and blind copy we say. Yes, ma'am, you can send. So while dispatching only, if you know all your recipients, you can send it from there itself. So I'll just show you that part. Okay. So while sending only, if you click on add recipient, you can add multiple recipient at a time, madam. So if I want to send it to more than one person, I can do that. If I'm sending it within CSIR and outside also, I can add multiple recipient, madam. Here, I have added 8 recipient in just one click. So I am maintaining a thing called address book. Okay. What is this address book? So as we have an address book or a phone book in our mobiles, similarly, you can also maintain an address book here in eOffice, wherein you can save the details of the people whom you are communicating very frequently, whom you are sending replies or draft very frequently, and from whom you're receiving docs or receipts very frequently, any letters very frequently. So you can maintain a proper address book here, and you can also use this address book time to time. Just one click and all the details would be fetched here. Similarly, for intra eOffice, this option, the second option, is for your complete department, including all the labs, the CSIR headquarters, and all the state offices. So here you will have all the name of the employees of all the labs, CSIR, complete instance. You can select anyone from here. You'll have all the employees listed here. So here you can send multiple copies, madam, multiple Sir, ways you can send. Please, sir. सर जैसे जो हमारा
मैनुअल प्रोसेस होता है, उसमें हम किसी भी फाइल को जब प्रोसेस करते हैं, फाइनली हम ऑफिस ऑर्डर उनको भेजते हैं जिनको भेजना हो। फिर भी क्या खाली ऑफिस ऑर्डर जाएगा या पूरी फाइल जाएगी? फाइल तो आपके पास ही है सर, फाइल कहीं नहीं जाएगी। सिर्फ जो ऑफिस ऑर्डर या लेटर या ड्राफ्ट आपने जो बनाया ना, सिर्फ वही डिस्पैच होगा यहाँ पे। बाकी जो करस्पॉन्डेंस वगैरह लगे हुए हैं, जो इसके साथ नोटिंग पार्ट लगा हुआ है, कुछ नहीं जाएगा। अगर आप वो भेजते हैं जी, भेजते हैं अभी ना, हाँ, तो कुछ भी नहीं जाएगा सर। सिर्फ और सिर्फ आपका जो लेटर आपने बनाया है सिर्फ वही जाएगा। अगर आप वो भी भेजते हैं, नोटिंग भी भेजते हो, तो इसमें वो भी प्रोविजन है। वैसे तो भेजते नहीं है ऑफिशियली, तो भेजा नहीं जाता है नोटिंग वैसे पार्ट, बट उसमें एक और ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद। अभी फ्रॉम हियर मैडम यू कैन ऐड मल्टीपल रेसिपिएंट्स, आप एक से ज्यादा लोगों को भेज सकती हैं ये। ओके, कॉपी टू ऑल, क्लिक ऑन ओके। सिमिलरली फॉर फिजिकल, पोस्टल में आप स्टैम्प सेलेक्ट करेंगे, किस दिन इसको डिस्पैच करेंगे वो दिन सेलेक्ट करेंगे, वो टाइम सेलेक्ट करेंगे, कॉपी टू ऑल एंड ओके। तो आप ये देखिए, आप इसको पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, दोनों मीडियम से भेजा जा सकता है। यहाँ से पोस्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रिंट आउट निकालना, डिस्पैच कर देना है, ठीक है, फिजिकली। और ईमेल के लिए ऑटोमेटिकली ईमेल पे आपके डिस्पैच कर देगा। एक और चीज यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, in case if there are any enclosures with this particular draft, तो आप enclosures भी लगा सकते हैं, ठीक है। enclosures लगाने के लिए enclosure लगाने के लिए यहाँ पे अटैचमेंट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना enclosure लगाइए, ठीक है। यहाँ से आप अपना enclosure लगा सकते हैं। अच्छा, एनी क्वेश्चन इन फाइल पार्ट तो आप पूछ लीजिए, एल्स विल मूव अहेड to the other options that we have in eFile. No questions? चलिए, we'll move ahead to the search part. सर्च कैसे करेंगे ये ऑफिस में देख लेते हैं, उसके बाद then we will probably I'll show you 2 to 3 options more, then we'll end the session. सर्च करने के लिए एडवांस सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हेलो, आई हैव वन क्वेश्चन। हेलो हेलो, हाँ सर, प्लीज पूछिए सर, पूछिए, हाँ, क्वेश्चन पूछिए। क्या ये जो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, इज इट अवेलेबल ऑन यूट्यूब? आई मीन अगर मुझे बाद में ये देखना है वीडियो। हाँ, यूट्यूब पे नहीं सर, यहीं पर ही आपको फैसिलिटी हमने प्रोवाइड कर रखी है, वीडियोस की भी और FAQs की भी। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वो आपको लास्ट तक रुकना पड़ेगा मेरे साथ इस चीज के लिए। हाँ, डेफिनेटली। इसलिए मैंने पहले नहीं बताया, वो पूरी फैसिलिटी, पूरे वीडियोस हमने बना के डाले हैं इसमें। जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। सर्च करने के लिए फाइल, रिसीट, डिस्पैच, कुछ भी सर्च करना हो, एडवांस सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप फाइल भी सर्च कर सकते हैं, रिसीट भी सर्च कर सकते हैं, डिस्पैच भी सर्च कर सकते हैं, डिटेल में सर्च कर सकते हैं। यू कैन सर्च इट इन डिटेल। व्हाट डू आई मीन बाय सर्च इट इन डिटेल? इफ यू जस्ट रिमेंबर व्हेन द फाइल वाज क्रिएटेड, अगर आपको सिर्फ ये पता हो फाइल कब क्रिएट हुई है, कौन से महीने में, एंड हु क्रिएटेड द फाइल, किसने वो फाइल बनाई है, उसके बेसिस पे आप सर्च कर सकते हो, चाहे फाइल हो चाहे रिसीट हो, किस महीने में बनी है, किस साल में बनी है, which year, which month, which section created the file, which section diarized the doc. You can actually search anything using these parameters. इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास सर्च करने के लिए। कब डायरी हुई, कब रिसीव हुई, क्या लेटर पे डेट, किसी भी तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। आपकी कोई फाइल, कोई रिसीट,
खो ही नहीं सकती है। ठीक है, चाहे आप कुछ कर लें वो खो नहीं सकती है बस। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हो गया फाइल, रिसीट, डिस्पैच। 2-3 चीजें और हैं सेटिंग में, बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ से आप अपनी एड्रेस बुक मेंटेन करेंगे। ये छोटा सा ऑप्शन है सेटिंग के अंदर, यहाँ से आप एड्रेस बुक मेंटेन कर सकते हैं। बहुत फ्रीक्वेंटली अगर किसी से कम्युनिकेशन होता है, इफ यू आर कम्युनिकेटिंग, इफ यू आर गेटिंग टास्क वेरी फ्रीक्वेंटली फ्रॉम एनीवन outside or inside CSIR, you can add that particular contact here for yourself, for your section, for your whole department. यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे, क्लिक करेंगे सेव पे, दैट्स इट। देन कम्स द प्रेफरेंसेस ऑप्शन। ये कुछ प्रेफरेंसेस हैं आपकी जो आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, क्विक नोटिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से आप क्विक नोटिंग ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ओके, कोई भी लेटर आपको रिसीव होता है आपके लैब ने, हो सकता है CSIR लैब ने CSIR हेडक्वार्टर को भेजा है कोई भी लेटर, यहाँ पे रिसीव होगा इंट्रा ई ऑफिस में। अगर उन्होंने ड्राफ्ट के थ्रू बना के डिस्पैच करा है, यहाँ पे रिसीव होगा। ठीक है, हेडक्वार्टर में या लैब में, ध्यान रखिए कहाँ रिसीव होगा, रिसीव्ड लेटर में। तो ये जो ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड बड़े इंपॉर्टेंट है। ये रिसीव्ड लेटर्स में रिसीव होगा, यहाँ से आप डायरी कर पाएंगे इसको। ऐसे राइट पे लेके जाएंगे इसको और डायराइज बटन पे क्लिक कर देंगे, तो राइट में जितने भी डिटेल्स हैं ये सारी अब ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्या ईमेल है, कंसल्टेंट, नेम ऑफ द पर्सन, ट्रेनिंग डिटेल्स, इसका सब्जेक्ट आ गया है एंड उसका सिंपली क्लिक करना है जनरेट पे। ठीक है, कई बार जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन होती है, डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, रिसाइकिल बिन में चला जाएगा ये। ठीक है, फिल्टर भी लगा हुआ है इनबॉक्स में, यहाँ से आप फिल्टर आउट कर सकते हैं फाइल की क्या ड्यू डेट है, क्या सेंड डेट है, उसके बेसिस पे वही फाइल्स देखें मेरे को। किसी कोई प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट फाइल है सिर्फ वही दिखनी चाहिए बस। तो यहाँ से प्रायोरिटी सेट करके ओके पे क्लिक करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली फाइलें दिखेंगी आपको। फिर ये ओनली बी एबल टू सी इंपॉर्टेंट फाइल्स इफ यू सेट अप अ प्रायोरिटी हियर। ओके, द नेक्स्ट थिंग is, and the last thing for this session is the FAQs and the tutorials. Okay, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सपोज आपके लिए, तो मैं आपको अब बता देता हूँ FAQs और tutorials कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से आप देख सकते हैं FAQs और tutorials को। एक सेकंड देना, मैं FAQs और tutorials आपको बता देता हूँ। FAQs और tutorials के लिए हेल्प पे क्लिक करेंगे, हेल्प पे क्लिक करेंगे तो F क्लिक करेंगे, FAQ पे क्लिक करने के बाद रिसीट, फाइल, ड्राफ्ट, डिस्पैच, DSC से रिलेटेड, सेटिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और यहीं पे ही मिलेंगी आपको eOffice की हेल्प वीडियोस। कोई नई फाइल क्रिएट करनी है, इसको आप प्ले कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। ठीक है, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे ऐड करनी है, ग्रीन शीट पे कैसे लिखना है, येलो नोट क्या होता है, रेफरेंसिंग कैसे करनी है, फाइल की पार्किंग कैसे करी जाती है, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। फाइल को क्लोज कैसे करना है, रीओपन कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है या डाउनलोड करना है वो कैसे करना है, एडवांस सर्च कैसे करना है, सारे ऑप्शन जो मैंने आपको अभी बताए हैं वो सारे यहाँ पे हैं। सर इस पे एक चीज पूछनी थी, हाँ, ये FAQ करने पर इंटरनल एरर दिखा रहा है सर्वर पे, ब्राउजर का प्रॉब्लम हो सकता है? पॉसिबल है सर, पॉसिबल हो भी सकता है। एक बार आप अपने हेडक्वार्टर में एक बार बताइए कि FAQ का एक, जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये एरर आ रहा है, तो अब मैं आपको फिर बताता हूँ। अगर FAQ नहीं आपको यहाँ पे किसी कारण से दिख रहे हैं और आपको कुछ चीज़ देखनी है बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक यूजर मैनुअल का भी ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक यूजर मैनुअल खुल जाएगी, वो भी डायनामिक है। डायनामिक से मेरा मतलब क्या है,
मैं अगर कहीं पे क्लिक करूंगा ना किसी भी ऑप्शन पे, जैसे ड्राफ्ट कैसे क्रिएट करना, जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ड्राफ्ट वाला पार्ट खुल जाएगा मेरा, ठीक है। साथ ही साथ ये भी एक ऑप्शन हमने दे रखा है यूजर मैनुअल का भी। अगर अभी आपका एफएक्यू नहीं चल रहा है किस कारण से, आई डोंट नो किस कारण से नहीं चल रहा है, तो आपके पास यूजर मैनुअल का भी ऑप्शन है, ठीक है। ओके ठीक है, यूजर मैनुअल तो ओपन, इट इज ओपनिंग। यस सर, उसमें आप जैसे इंडेक्स में जाएंगे ना, जहाँ पे भी क्लिक करेंगे जिस भी हेडिंग पे, वो हेडिंग खुल के आ जाएगी आपके लिए, वो डायनामिक बनी हुई है पूरी, लिंक कर रखा है हमसे, ठीक है। One additional question is that this is all about the using that eOffice. Okay, is there any other session available where what is the role of administration in eOffice is explained there? How what are the things we can do as admin? Yes sir, for admin part there is a specialized PIMS training. I suppose if your department request for that to NIC, we will surely provide the training. So I suppose Rashmi madam से एक बारी उसकी skill आपको confirm करना पड़ेगा. Okay, okay. Because whatever we are facing, that some of the user departments names are incorrect, or whether some user names are incorrect, so that can be editable from admin part, or we need to request NIC to do that. सर एडमिन एडिट कर सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, बट कुछ जैसे आपकी क्वेरीज हैं तो क्वेरी सेशन एक PIMS के लिए रखवा सकते हैं, उसके लिए आप एक रिक्वेस्ट करेंगे हेडक्वार्टर में, तो वो फिर रख दिया जाएगा एक PIMS का अलग से सेशन एडमिन के लिए, कि भाई स्पेसिफिक एडमिन की क्वेरीज ही रिजॉल्व करी जाए पहले, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप बता रहे हैं। यस यस, ओके, थैंक यू। हेलो, एनी मोर? यस सर, प्लीज बताइए। मैं वो इस पे क्लिक कर रहा हूँ हेल्प पे, तो मुझे खाली मैनुअल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हेल्प पे क्लिक करा आपने? मैनुअल एक डॉक फाइल दिख रही है मुझे, खाली PDF फाइल, सॉरी। अच्छा, सिर्फ मैनुअल आपका यूजर मैनुअल दिख रहा है, बाकी FAQ वगैरह नहीं दिख रहे हैं? कुछ नहीं दिख रहा है। मैनुअल भी सर उतनी ही हेल्पफुल है जितनी FAQs है, उतनी ही मैनुअल है। हमने मैनुअल से ही FAQs बनाए हैं अपने ये। अच्छा, मुझे लगा मैं वो वीडियो का ऑप्शन देख रहा था तो वहां पर नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं, अगर नहीं आ रहा है सर तो हम एक बार चेक कर लेंगे क्यों नहीं आ रहा है, अवेलेबल होना चाहिए वो। और दूसरी एक बात की, क्या ऑफलाइन कुछ मतलब हैंड्स ऑन ऐसा रख सकते हैं आप? सर उसके लिए आपको डिपार्टमेंट अपना हेडक्वार्टर बात करनी पड़ेगी वो, क्योंकि हम तो शास्त्री पार्क में हैं। सो अच्छा, हाँ, हम NIC शास्त्री पार्क से बात कर रहे हैं, तो वो आपका डिपार्टमेंट ही कंफर्म करेंगे एक बार। जी, थैंक यू सर। And any more questions here before we end this session? Any questions? In case, kindly let me know, or then we'll end the session for today. Hello. Yes, madam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I tried calling Asono madam, but she didn't picked up the phone. Ma'am. Okay, ma'am. It is 714-945-534. I'll write it down on the WhatsApp and send it to you. Okay, madam. Any more questions for today? अक्षय सर। Yes, madam. Yes. सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये पुलअप का जो ऑप्शन है क्या रोल बेस्ड है अब? नहीं सर, सबके लिए है पुलअप। नहीं, ये आ नहीं रहा है। मैंने पुलअप का ऑप्शन, अभी मैं एक कंप्लेंट पे गया था तो वहां पे ये इशू था कि वो फाइल को पुलअप करना चाह रहे थे अपने जूनियर से, लेकिन वहां ऑप्शन ही नहीं आ रहा था पुलअप का। ओके। पुलअप का अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप दिखा दीजिएगा, ठीक है, मेरे को कल के दिन में, ठीक है।
हाँ, तो स्पेसिफिक अगर कुछ ऐसा है तो आप मेरे को दिखा दीजिएगा, उस पे फिर हम आगे पुल अप तो तब भी हो सकती है ना, फाइल खुल गई है तो भी पुल अप कर सकते हैं ना। हो जाती है। ठीक है सर, तो ऑप्शन आ नहीं रहा है वो। कोई नहीं, वो देख लेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है सर, अगर एक बार वीडियोस या थोड़ा डिटेल में ऐड करवा देंगे आप तो अच्छा रहेगा। मतलब वो मैं देख रहा हूँ पीडीएफ उतना वो लग नहीं रहा, डिटेल में नहीं दिया उसमें। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, उसके लिए हम एक बार ही बात कर लेंगे। जी। I think FAQ can be added from our CSR headquarter itself. Maybe there's some separate module or has to be linked up there. Because in our module, it seems that it has FAQ is not added right now. Yes, sir. So let me ask our team as well regarding this. We will take it up with NIC that FAQ is not presently visible and it will be active soon. Sure. एक बारी जरा कनेक्ट करना, एक बार इनके कुछ क्वेरीज हैं तो एक बारी देख लो, मैं जरा दूसरे सेशन में जा रहा था। One another request is there. Basically, whenever we are moving to PIMS, I'm not finding any way to go again back to the kind of our main WoW portal. For that, suppose you are moving to PIMS, there is no way to go back to the WoW portal. PIMS, here you are. Okay. For home, click on home. Click on your name, click on home. It would land up back on your WoW portal. No, but it is not happening in the CSIR portal. You just try to check once, for the or other may check. Issues, yes. For the specific issues like this, if you're from the headquarter, you can let me know, or because these are some specific issues. So might be something that needs to be changed, or some browser setting could be something. Yes, madam. Hello. Yes, madam. Ekta, have you connected? Ekta. Hello. Yes, connected. Or you're audible. Ekta, please take the queries. In the meantime, I have to take another session. Okay. ठीक है. Okay. So Ekta will be here. She is one of my colleagues, and she'll be assisting you for your queries. Thank you all for joining. Ekta, kindly take over, please. Thank you. Okay. Hello, sir. Any doubt, any query you can ask? मैम हमें पुलअप में थोड़ा कंफ्यूजन है। पुलअप में मैम आप फाइल तो अभी आपके पास ऑप्शन आता है पुलअप का कि नहीं आता है? मैम एक्चुअली कुछ एक फाइल्स तो होती है जिनके आगे पुलअप का ऑप्शन आता है और कुछ एक के आगे नहीं आता। और हम कल एक कॉल पे गए थे, उसमें जो फाइल हमें पुलअप करनी थी उसके आगे पुलअप का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। तो ये किस केस में आता है या ये रोल बेस्ड है? मतलब हेलो मैम हेलो एकता मैम। हेलो। तो मैम आई एम ऑडिबल? यस आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ मैम नाउ यू आर ऑडिबल। ओके। माय क्वेरी इज रिगार्डिंग पुलअप। हाँ मैम, मैं आपको वही चीज बता रही हूँ कि पुलअप का जो ऑप्शन है वो रोल बेस्ड नहीं है, ठीक है। पुलअप का ऑप्शन सभी के पास आएगा, बट इसमें क्या होता है कि जैसे आप किसी
कोई फाइल पुलअप करना चाहते हैं ना, तो किसी अकाउंट से फोर्सफुली पुलअप करना चाह रहे हैं, तो उस केस में ना हायरार्की मेंटेन होता है। अगर आपका हायरार्की बना हुआ नहीं है तो तब आपके पास पुलअप का ऑप्शन डिसेबल आएगा। ठीक है, अगर आपके डिपार्टमेंट में पुलअप का ऑप्शन आपको डिसेबल है, दैट मीन्स कि आपकी हायरार्की मेंटेन नहीं है। अगर आपकी हायरार्की प्रॉपर्ली मेंटेन है तो आप इजीली पुलअप कर सकते हैं किसी अकाउंट से फाइल ना। व्हाट डू यू मीन बाय हायरार्की? हायरार्की मीन्स मैम कि जैसे अभी जहाँ पर आपका एम्प्लॉय क्रिएट होता है, तो पहले वाले वर्जन में हमारा होता था एम्प्लॉय मास्टर डिटेल, बट इन अपग्रेडेड वर्जन यू विल यूज PIMS, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें एक पोस्ट हायरार्की ऑप्शन होता है। ठीक है, तो उसमें हायरार्की मेंटेन होता है कि दैट मीन्स कि किसी का कौन रिपोर्टिंग है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से पूरी पोस्ट हायरार्की मेंटेन होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सेक्शन वाइज या डिपार्टमेंट वाइज फाइल पुलअप कर सकते हैं। और मैम इसका भी सेम रीजन होगा कि किसी फाइल के आगे पुलअप का ऑप्शन आता है और किसी फाइल के आगे पुलअप का ऑप्शन नहीं आता हाँ है? हाँ, वो सेक्शन वाइज देखना पड़ेगा। वो आप दिखा सकते हैं एक बारी रिमोट पे, जो भी ठीक है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आप फेस कर रहे हैं, तो एक बारी रिमोट पे लेके देख लेंगे। ठीक है मैम, ओके। ऑलराइट मैम, ऑलराइट। Hello. Hello. Yes, sir. Yeah. In help menu, when I click on FAQ, it shows that internal server error. Okay. In your live site instance, sir? Pardon? In your live site instance, sir? Yeah. Means कि आप Yeah. ओके ओके ओके, तो फिर ये सर इशू आप रेस कर सकते हैं, जो भी आपके यहाँ पर सिस्टम एडमिन है, तो आप उनको बता के वो हमें मेल डाल देंगे, तो वो ठीक हो जाएगा। दिस इज द बैक एंड इशू ना सर, नॉट फ्रंट एंड। This is I'm getting the same issue, ma'am. ओके ओके, ठीक है, कोई नहीं सर, आप मेल डलवा दीजिए। तो दिस इज द बैक एंड इशू, नॉट फ्रंट एंड, तो आई विल रिजॉल्व इट। Thank you. Ma'am, can you provide me your mobile number? एक्चुअली मैम आपके यहाँ पर जो अभी सिस्टम एडमिन है, वो हमारे ऑफिस में जिसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ना, तो वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों शेयर कर देंगे विद होल डिपार्टमेंट ना। ठीक है, ऑलराइट मैम। ओके ओके मैम। ओके ओके मैम। ओके ठीक है। Hello. Hello. Yes. Yeah, this is Jagtap here from NCL. Actually, there are some transfers happen in between. So now the data what we sent is there are so many changes. I mean, at least 10 changes are there, and some promotions are also happened. So how to change that data? I mean, some of the employees are left NCL and joined some other institute. And that data has to be updated. So what is the procedure now? What do you suggest? Please contact the help desk. They will help you to resolve this issue. Pardon? Contact? Please contact central help desk. They will be able to resolve issue. And I think in NCL there is one manpower resource for your help desk. Okay, right, sir. No, he has not joined, but I heard it's. Then please contact central help desk. Right, sir. Okay, thank you. If there is no issue, can we close? Okay, then. Thank you. Thank you. We give our thanks to Akshay as well. With this, we are closing the session for today. Thank you. Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thanks to all. Thank you.